दोन टीमाच्या नाही दलतीतली वगी मॅच स्टार्ट करू काम गेलो सहकार कर का म्हणून तुमच्याला निमून घेता असाची दोन टीमाच्या लगी आम्ही निमून रिक्वेस्ट करता असं जलतीतली वगी मॅच क्लिअर करता तुम्ही आमक सहकार कर का. धन्यवाद. और मैच यहाँ पर शुरू हो रहा है. धन्यवाद श्रीमान सुरेश भट्ट सर. जहाँ तक सवाल है मैच नंबर 12 यहाँ पर शुरू होता हुआ और श्रीमान नरेश सर को भी धन्यवाद देते हुए इस मैच में बढ़ते हैं. और पहली गेंद मैच की फुल टॉस पुल किया इस वक्त डीप मिड विकेट पर. कोई फील्डर वहां पर नहीं और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए. टीम एबीएनजी के लिए नागेश एक परफेक्ट स्टार्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं धमाकेदार शुरुआत, सही शुरुआत यहां पर कर चुके हैं. छक्के के जरिए पहली गेंद पर फुल टॉस गेंद थी और भरपूर फायदा उठाते हुए गेंद को भेज दिया. इस वक्त 6 रनों के लिए ड्राइव किया. लॉन्ग ऑफ पर गेंद पहुंची और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता. 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के. जबकि उनकी पारी का पहला ओवर यहां पर प्रगति पर और गणेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए नागेश ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं. वैभव इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. लेफ्टी बैट्समैन बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए यह गेंद ऑन साइड पर मोड़ा खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर. और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 8 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. गणेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ओ बोल्ड आउट. गेंद स्टंप्स पर टकराई थी लेकिन बेल्स इस वक्त नहीं गिरे और बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बाल बचते हुए. गेंद अंतिम क्षण में स्टंप्स पर टकराई थी जरूर लेकिन बेल्स डिस्टर्ब नहीं हुए और बल्लेबाज बच चुके इस गेंद पर. यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा. बेहतरीन गेंद थी इस वक्त. टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई लेग स्पिन गेंद और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 8 रन बिना किसी नुकसान के. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए गणेश. नागेश इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला है. एक्स्ट्रा कवर पर 2 फील्डर गेंद का पीछा करते हुए गेंद अपनी रफ्तार को कुछ हद तक खो चुकी है लेकिन सीमा रेखा को पार करने में सफल 4 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक. गेंद को स्कूप किया था एनफील्ड क्लियर करते हुए एक्स्ट्रा कवर फील्डर के सिर के ऊपर से और चौका इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं बल्लेबाज. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के. जबकि उनकी पारी का पहला ओवर समाप्त हो चुका. फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर टीम एबी एनजी मेड अ परफेक्ट स्टार्ट 12 विदाउट लॉस. और जहां तक टीम एबीएनजी का सवाल है इस मैच को उन्हें जीतना बिल्कुल बेहद कहना पड़ेगा जरूरी हो चुका है क्योंकि अगर इस मैच में वो विजय दर्ज करते हैं तो उनकी सेमीफाइनल पहुंचने की आशाएं जीवंत रहेंगी. तो इसलिए यहां पर एक धमाकेदार शुरुआत उनके बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज कर चुके हैं 12 रन बिना किसी नुकसान के. मैच नंबर 12 जीएसबी प्रीमियर लीग 2022 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने इस श्रृंखला का शानदार तरीके से प्रस्तुति की है. ब्रॉडकास्ट पार्टनर हैं यूथ ऑफ जीएसबी वर्ल्ड वाइड. और जहां तक सवाल है गेंदबाज का पहली गेंद बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ रन नहीं मिलेगा. वरुण शानभाग गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं. बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी और गेंद पर स्ट्रोक खेलने में चूके और गेंद सीधे पहुंच चुकी है विकेट कीपर के हाथों में. 12 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के. वरुण शानभाग गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए. वैभव सामना इस वक्त करने के लिए तैयार. अंपायर विकेटों को यहां पर सही करते हुए और ओवर की पहली अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. वर्षा अभी भी मैदान पर होती हुई लगभग 3 घंटे तक हो चुके हैं. वर्षा शुरू होकर
लेकिन अभी भी वो बरसती हुई यहाँ पर और इस वर्षा तले ये क्रिकेट श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल, फील्डर गेंद को फील्ड करते हुए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 13 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है। वरुण शानभाग अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, नंदेश जो कि स्ट्राइकर है इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, उछाला लगोल पर स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड और गेंद सीधे कमेंटेटर बॉक्स के दीवार पर आकर टकरा चुकी है 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त नंदेश के बल्ले से लगता हुआ, ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट एंड डिस्पैच्ड इट इन अ स्टाइल ओवर लॉन्ग ऑन फेंस फॉर 6 रन्स, परफेक्ट स्ट्राइक, 19 विदाउट लॉस, ऑफ कटर गेंद, परिवर्तन के तौर पर टॉप एज, मौका हो सकता है फील्डर के लिए, लेकिन और यहां पर इस कैच को लपकने में सफल, बेहतरीन कैच, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कैच टेकन बाय द डीप इन विकेट फील्डर, और जो कि यहां पर वेट आउटफील्ड है, आउटफील्ड काफी हद तक गीली हो चुकी है, इस गीली आउटफील्ड में दौड़ना उतना आसान नहीं है, फिसल कर गिरने की संभावना भी हो सकती है, लेकिन यहां पर कम से कम 12 से 15 कदम वो दौड़ते हुए इस गीली आउटफील्ड में इस कैच को बेहतर जजमेंट के साथ उन्होंने लपका अंतिम क्षण में, और निस्संदेह इन हालातों में ये एक बेहतरीन कैच यहां पर कहलाएगा जो डीप इन विकेट फील्डर ने लपका, और इसी के साथ ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। नंदेश डिपार्ट्स, 17 of 17 deliveries he scored. Absolutely fantastic innings came to an end from him. And the first wicket lost for team ABNG. It's 19 for 1. और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, ऑफ कटर गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, मच स्ट्रेटर लाइन एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन एंड द स्कोर बोर्ड स्टेज एट 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। for the loss of 1 wicket. इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया मिड ऑन की दिशा में, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर। इट्स 21 for the loss of 1 wicket in the over number second has been completed. So after 2 overs they are looking in a commanding situation for team ABNG. Score 21 runs for losing 1 wicket in the face of Nandesh. And they scored 21 runs in the 2 overs with the run rate of exactly 10.5 runs per over. And this is an absolutely fantastic start for them. Mahesh, the bowler, is now brought into the attack. और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे, विनायक का इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, फुल टॉस, टॉप एज, मौका हो सकता है, मिड विकेट फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और आखिरकार सफलतम इस कैच को लपकने में सफल, और इसी के साथ विनायक का विकेट यहां पर गिर चुका है, 21 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका है। 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। एंड जस्ट हॅलो, आता आयची साच्या नेक्स्ट मॅच टँक कोब्रा आणि जय हिंद गेम्स कारकाळा या 2 टीमाचे कॅप्टन हांगा टीम रजिस्ट्रेशना खातीर येवका। So Tank Cobra will take over Jai Hind Games Karkala in the next match, and because of that I once again request all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. 21 for the loss of 2 wicket at the start of the 3rd over in fact, and now we are just waiting for the new batsman. तो धीरे धीरे होले होले अपने कदमों को बढ़ाकर क्रीज तक पहुंचते हुए बल्लेबाज इस वक्त सामना करेंगे
और कार्तिक नए बल्लेबाज और वो इस वक्त सामना करेंगे महेश की गेंदों का। और महेश दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, बैकफुट पर जाने के बाद रन्स इस बीच नहीं मिलेगा और फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया स्वयं गेंदबाज ने। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 21 रनों के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। अगली गेंद इस बार बोल्ड आउट, समसो पर गेंद टकरा चुकी है, टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल जमीन के सहारे आई थी, वेट पिच के कारण और आखिरकार यहां पर पिच पर जो गीलापन मौजूद है उसकी वजह से गेंद टिप्पा खाने के बाद उछाल नहीं ली, बिल्कुल जमीन के सहारे आए और यहां पर गेंद की लाइन को समझ नहीं पाए और गेंद सीधे लेग स्टंप पर जाकर टकराती हुई बेल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ यह तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है 21 रनों के ऊपर। इट्स 21 for 3 इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस फॉर टीम ABNG। नए बल्लेबाज सामना करते हुए, ये गेंद ड्राइव करना चाहा ऑन साइड पर, गेंद गई ऑफ साइड पर, बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद शॉर्ट कवर पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। इट्स 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। नाउ विद दैट सिंगल द स्कोर बोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू, और महेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद फ्लाइटेड, बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली परफेक्ट वन, टॉस की गई थी, गेंद तक पहुंचना चाहा, चूंकि कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। अगली गेंद, यह गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, 2 बेहतर गेंदें फेंक चुके हैं और 2 बेहतरीन गेंदों के साथ वो ओवर की समाप्ति यहां पर कर चुके हैं बल्लेबाज गेंदबाज महेश। 3 ओवर की समाप्ति और पहला बेहतर ओवर अगर क्लासिक क्रिकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए जो कि समाप्त हो चुका है। बेहतरीन ओवर, सिर्फ 1 रन इस ओवर में प्रदान किया महेश ने, 2 विकेट भी उन्होंने प्राप्त किए और 3 ओवर के बाद इस वक्त टीम ABNG का स्कोर है 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 22 for 3 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। कार्तिक का पहली गेंद ऑन साइड पर, गेंद को मोड़ा खूबसूरती के साथ, मिड विकेट पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा, दूसरा रन लेना चाहते हैं, नहीं मिलेगा और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज यहां पर फील्डर को विचलित करने का प्रयास किया, 2 कदम आगे बढ़ाई, इसे देखते हुए फील्डर ने थ्रो किया था स्टंप एंड पर, निशाना टकराया लेकिन बल्ला बल्लेबाज रख चुके थे और ओवर थ्रो के रूप में 1 रन यहां पर बैट्समैन बल्लेबाज पूरा कर चुके हैं। 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रारंभ हो चुका है और किरण गेंदबाजी यहां पर शुरू कर चुके हैं। बराबर का संघर्ष इस वक्त जारी। GSB प्रीमियर लीग 2022 अंडरआर्म क्रिकेट श्रृंखला, एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला, इस घने वर्षा तले अंडर फ्लडलाइट्स उर्वा क्रिकेट मैदान के इतिहास में ही पहली बार घने वर्षा तले अंडर फ्लडलाइट्स ये श्रृंखला यहां पर खेली जा रही है और कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने इस श्रृंखला की शानदार तरीके से प्रस्तुति की है। ब्रॉडकास्ट पार्टनर जो है यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाइड, और यह श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति करती हुई इस वर्षा तले एक बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, लगभग पैरों पर टकराने के बाद शॉट मिड विकेट पर गेंद जब तक फील्ड हो, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली गुड वन, केम अलोंग द कार्पेट, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद आई थी, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 25 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। किरण एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद ड्राइव किया, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद पहुंची, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर। और जहां तक सवाल है वैभव का, तो वैभव इस सिंगल के साथ ऑफ द स्ट्राइक जेवण ಜೈನಂತಿಲ್ ಕೊನೆ ಅಸ್ಲರಂಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ಜವಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ ಗೆತ್ತ ಸ ಊಟ ಆಗದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. इस बार कैच को लपक लिया गया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और इसी के साथ यह विकेट नंबर 4 गिर चुका है टीम ABNG का, जबकि स्कोर है 26 रन, 26 for 4 in the over number 4 in progress.
प्रशांत नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद और किरण इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइकर रन के बल्लेबाज नए बल्लेबाज प्रशांत के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद एक्स्ट्रा क्विकर गेंद टिप्पा खाने के बाद तेजी के साथ बल्ले को वंचित करते हुए निकली विकेट कीपर के हाथों में और इस गेंद पर पूरी तरह बीट हो गए बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर कमबैक अंतिम 2 ओवर में कर चुके हैं गेंदबाज क्लासिक क्रिकेटर्स के। सिर्फ 5 रन अंतिम 2 ओवर में प्रदान न कर चुके। पहले 2 ओवर में 21 रन उन्होंने उनके 2 गेंदबाजों ने प्रदान किया था और उसके बाद तीसरे और चौथे ओवर में सिर्फ 5 रन 2 ओवर में दोनों गेंदबाज प्रदान कर चुके हैं। एक अच्छा कमबैक कहना पड़ेगा। अंतिम 2 ओवर में क्लासिक क्रिकेटर्स के गेंदबाज कर चुके हैं। 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी और 5वां ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ। विघ्नेश इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को ड्राइव किया और इस बार यहां पर रन आउट हो चुका है। गेंद सीधे पहुंची थी शॉर्ट मिड विकेट पर, लेकिन इसे बिना देखे रन लेने की हड़बड़ाहट उन्होंने दिखाई और कोई मौका नहीं। इससे पहले कि वे अपने स्वस्थान पर लौटे सीधा थ्रो पहुंचता हुआ शॉर्ट मिड विकेट फील्डर का विकेट कीपर के हाथों में और विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट चटका दिए। एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। विकेट नंबर 5 वैभव की बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है और कुल मिलाकर 5वां विकेट यहां पर गिर चुका है, जबकि उनके टीम की रन संख्या है 26 रन 26 for 5। नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद अच्छी गेंद थी गेंद को खेलना चाहा ऑन साइड पर और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है रन आउट के रूप में इस बार गेंदबाज को पता नहीं था कि बेल्स इस वक्त उड़ाने जरूरी है रन आउट करने के लिए। वो सिर्फ स्टंप्सों पर उन्होंने गेंद को लगाने के बाद वहां पर खड़े रह गए और जब उनके टीम के अन्य खिलाड़ियों ने उन्हें आगाज किया कि यहां पर बेल्स उखाड़ने जरूरी है, तो यहां पर धीरे से वो बेल्स को उखाड़ते हुए एक बेल को उखाड़ते हुए और इसी के साथ 6वां विकेट गिर चुका है। 26 रन 6 विकेट के नुकसान पर 26 for 6। इस बार अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। नए बल्लेबाज नितिन इस वक्त नॉन स्ट्राइकर रन पर। पुनीत माफ कीजिए, नए बल्लेबाज इस बार जाना चाहिए था गेंद और गया बैट बल्ला और भाग्यशाली रहे कि शॉर्ट मिड विकेट पर जो फील्डर थे उनके सिर के ऊपर से इस वक्त बल्ला बैट गुजरता हुआ और इस मौके पर वो बाल वहां पर बचते हुए। अक्सर वर्षा के हालातों में ऐसी घटनाएं होती रही हैं। कई बार हमने देखा है कि बल्ला बल्लेबाज के हाथ से फिसल कर कोसों दूर जा गिरा है और यहां पर ऐसा ही हुआ और इस बीच फील्डर जो शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े हुए थे बाल इस घटना पर बचते हुए। विघ्नेश गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए इस बार बेहतर एब्सोल्युटली परफेक्ट वन। लगभग बल्ले के अति निकट गेंद टिप्पा खाते हुए फुल लेंथ गेंद थी। गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में चूके और सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची, रन से नहीं मिलेगा। बेहतर गेंदबाजी। 7वां विकेट 2 गेंद पहले गिर चुका है रन आउट के रूप में। इस बार एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, परफेक्ट यॉर्कर एंड ही गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन। ब्लॉक होल पर गेंद टिप्पा खाई और सीधे उनके बल्ले और पैर को चीरती हुई मिड और लेग स्टंप पर जा टकराई। 8वां विकेट यहां पर गिर चुका है। 26 for 8 and this is an absolutely tremendous comeback made by the bowlers of classic cricketers after being conceding 21 runs in the first 2 overs. They bounced back very well in the next 2.4 overs, capturing 2.5 overs, capturing 7 vital wickets for adding just 5 runs, and this is an absolutely fantastic comeback made by the bowlers. इस बार लेग स्टंप पर आते हुए विकेट कीपर चूके और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है
बाई का इशारा अंपायर द्वारा 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका काफी देर के बाद 27 रनों पर 8 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है 5 overs completed it's 27 for 8 still the batsmen of team ABNG searching for the right track अंतिम ओवर शुरू होता हुआ गेंद को इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में ड्राइव कर दिया 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर 8 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदें सिर्फ बाकी अब उनकी पारी में और किरण गेंदबाजी करते हुए यह गेंद अच्छी गेंद थी बल्ले का भीतरी किनारा लगभग जमीन के सारे आए थे गेंद को खेलने में चुके बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद चंद टिप्पों बाद कुछ टिप्पों बाद गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में रन से नहीं मिलेगा 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं किरण फुल टॉस पुल किया डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद 1 रन मिलेगा 1 ही रन से बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 28 रनों पर 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में किरण न फेंक चुके हैं 2 विकेटें सिर्फ सुरक्षित इस वक्त टीम एबीएनजी के लिए और इस बीच वाइड का इशारा और सबसे काफी बाहर की ओर गेंद निकलते हुए और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है 30 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स अगली गेंद जमीन के सहारे रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला गेंद का पीछा करते हुए और जब तक गेंद को वो फील्ड करे 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके 31 नाउ 2 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में जस्ट 2 balls नाउ लेफ्ट इन देयर इनिंग्स गेंदबाज की ओर की अगली गेंद रिवर्स शॉट टॉप एज और गेंद इस वक्त पहुंच चुकी है थर्ड मैन पर 1 रन का इजाफा दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 2 रन यहां पर यशस्वी तम पूर्ण कर चुके हैं नाउ द स्कोरबोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 33 for the loss of 8 wickets and the last ball of their innings is now coming up अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज की रन तैयार यह गेंद कदमों का इस्तेमाल करके आगे निकले गेंद को इस वक्त खेल दिया मिड विकेट पर गेंद वहां पर रुक चुकी है दूसरा रन लेना चाहते हैं नॉन स्ट्राइकर पर बल्लेबाज दौड़ कर आए और यहां पर स्ट्राइकर एंड पर रन आउट होता हुआ और यहां पर फिसल कर गिर चुके हैं बल्लेबाज और पारी के अंतिम गेंद पर 9वां विकेट खो चुका है और इसी के साथ उनके निर्धारित ओवर पूर्ण हो चुके हैं तो टीम एबीएनजी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 6 ओवर में 34 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर टीम एबीएनजी स्कोर 34 रन्स फॉर लूजिंग 9 विकेट्स in the stipulated 6 overs and now they set a victory target of 35 for classic cricketers and as far as the required run rate is concerned just under 6 runs per over they have to score for victory that means in exactly calculation it is going to be 5.85 runs per over they have to score for victory with the help of 10 wickets the present equation shows for them 35 रनों का लक्ष्य 35 the target in 6 overs for classic cricketers Karkala and the innings now going to start और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी चंद लम्हों बाद तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ जब क्लासिक क्रिकेटर्स कारकाले की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी धन्यवाद थैंक यू हॅलो नेक्स्ट मॅच आहे टँक कोब्रा आणि जैन गेम्स कारकाळा 2 टीमाचे कॅप्टन आहे ना टीम रजिस्ट्रेशन खातीर हांगा मेन स्टेजाला येऊ का टँक कोब्रा आणि जय हिंद गेम्स कारकाळा 2 टीमाचे कॅप्टन आहे ना टीम रजिस्ट्रेशन खातीर हांगा मेन स्टेजाला येऊ का पायची दिसाच्या फर्स्ट मॅच व्ही क्रिकेटर्स आणि सप्तमी वॉरियर्स मध्ये जावचे असा 2 टीमांनी दैकोरनो टाइमार येवन आमकां मॅच टाइमार जावच्याक सहकार करता म्हणून तुमकां निमून घेता आसा व्ही क्रिकेटर्स आणि सप्तमी वॉरियर्स फर्स्ट मॅच पायी 9 गंटे स्टार्ट जाता 8:30 तुमकां रिपोर्टिंग टाइम दैकोरनो टाइमार येवन आमकां करेक्ट टाइमार मॅच जावच्याक तुमकां सहकार जावका म्हणून सांगून तुमकां निमून घेता आसा
व्ही क्रिकेटर्स आणि डेडली पॅन्थर्स मध्ये झालेल्या मॅचच्या मॅन ऑफ द मॅच अनाउन्स कर का? I request extra player of या मॅचच्या टीम एबीएन आणि क्लासिक क्रिकेटर्स दोन टीमाचे एक्स्ट्रा प्लेयर्स आणि दैकोर कमेंट्री बॉक्स अवचु का? टीम एबीएन आणि क्लासिक क्रिकेटर्स कारकल दोन टीमाचे एक्स्ट्रा प्लेयर आणि दैकोर कमेंट्री बॉक्स अवचु का? nice driven to the hands of short mid off stop by the fielder, and one more the first run coming up here for Classic Karkal. 35 to win the match in a stipulated 6 overs, and we will see how team ABNC will go into restrict the batsmen of their opposition Classic Karkal. Vinayak right arm over the wicket delivers, and again that outside the run of off time too far, so that wide signal by umpire. Scoreboard moves on to 2 on the board without loss of any wicket here in over number first in progress. Mahesh is on strike. Beautiful shot, lovely shot indeed. Ball running down to deep extra cover region. Will it go into the boundary? Yes, it does. Even the outfield is not quick enough, but as he's got the timing enough in that stroke, and so that ball travels towards the deep extra cover boundary for 4 runs. Lovely shot, beautifully driven off the back, off the front foot, and punched it away to the extra cover boundary for 4 runs. So with that boundary, scoreboard moves on to 5 on the board without loss of any wicket. Classic cricketers, they really got a good run here in this particular tournament, and one of the favorite of coming to the playoff round is celebrated with correction for the semi-final of this cricket tournament. And team ABMC need to have some hard work from the bowling. Right arm over the wicket. Was this time is bowled him, clean him up. This time the batsman looking for one more drive, but he's left the gap between bat and pad. Bowler just using that gap very well, and bowled beautifully there by bowler Vinayak, and he picked up the wicket number 1 for his team. व्ही क्रिकेटर्स आणि डेडली पॅन्थर्सच्या मॅन ऑफ द मॅच कोण म्हणून अनाउन्स कर का? ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 11 ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾರಂತೇಳಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ कोब्रानी जय हिंद गेम्स क्लब अंतू जय हिंद त्यांनी टॉस विन जाऊन फील्डिंग सिलेक्ट केलेलं असा. It's outside another off stump, and one more wide, one more runs to the total of Classic cricketers, and with that extra scoreboard now moves on to 7 on the board for the loss of 1 wicket. Seven for the loss of 1 wicket. Right arm over the wicket this time again. Nicely turns that one down to deep mid wicket region. And just a single good collection and good throw coming from the field and the deep mid wicket. Even it's a very difficult the water out there in the outfield, but still the field and the deep mid wicket is collects the ball very neatly and returns that one nicely towards the bowler's hand. 8 for the loss of 1 wicket. Some driven straight to the hands of mid-off. He drops the catch. Definitely going to be with an expensive drop. As the batsman Varun is really lucky in that occasion, because that ball went straight to the hands of mid-off. But as a fact that may be a little bit difficult condition for the fielders to catch the ball because of the wetness of the ball, wetness in the hands, very difficult to hold the catch. Quite understandable. But I think they need to grab these opportunities when you're playing against a team like Classic cricketers. 8 now after completion of 1 hour, and they lost 1 wicket.
So for the next match, the match number 13, Jahin, the games Karkal won the toss and they elected to field first. This time again, look at the ball, that one. Absolutely, it's a very difficult even for the wicket keeper. Instead of the batsman looking for the hitting the ball, maybe it's a dangerous that he can hit the wicket keeper behind the stump. It's a very careful actually in the negation, the wicket keeper behind the stump, because all the dangerous that ball, the bat is slipping out of the hands. They need to be very careful, wicket keeper behind the stump. Sometimes it's really dangerous. We have a lot of witness when the batsman trying to hit the ball pretty hard when he was trying to scoop the ball. Just using his feet, but oh my goodness, ball almost coming to the wicket. And they spun a lot and then luckily that ball just missed the stumps. The batsman tried to force that one. That was a free hit delivery and no danger actually because of that no ball. Again the bowler really struggling. The young man need to be a long way to go. Lot of inexperience about the playing in this condition. The one more wide. This time again, lovely delivery, beautifully bowled there by the young bowler Venkatesh. Now Vignesh, little correction, is just able to find his line and land so good in that occasion. Again, slower one, opportunity for the fielder, but it's landed very safely. I don't know why the fielder is standing and did that much of deep when his condition is not good for the batsman to hit the ball. And they can be in the unorthodox long off, can the opportunity to take the catch, but ball landed safely between mid off and long off, and scoreboard now moves on to 11 on the board for the loss of 1 wicket. Again rise that one, but not in the gap, straight to the hands of short mid wicket. With that single, scoreboard now moves on to 11 on the board. A little bit of correction, scoreboard 11 on the board for the loss of 1 wicket. Vignesh bowls this time again. The ball not really traveling in the outfield. It's a very wet. The water there in the outfield is very difficult to get the big stroke all along the ground. Deleting the ball is so difficult one. But still they got to get the runs what they really wanted. And good over there from Vignesh. After even they bowled some extra deliveries, he just conceded 4 runs in that over. So after completion of over number 2, chasing 35 to win this match, 12 for the loss of 1 wicket. One more young bowler has been introduced. Very young, Satya Prasad, 13 years age. It's been a really the very good experience for the talented players to come and perform. This time a slow leg spin delivery, quite useful, but a very well played there by the batsman Varun Shanbag, and he just got a couple of runs here. Scoreboard is 14 on the board for the loss of 1 wicket. Satya Prasad bowls right arm over the wicket. This time across the line, hitting that one quite beautifully. But again, just a single, not more than that. Ball is almost stopped with the waters of the rain on the field. Outfield, 15 on the board for the loss of 1 wicket. Another 20 runs required for the victory. Prashant is on strike. There's a lofted that one. The fielder that in the deep long off, but is a very squarer. That was a hit, the hit coming from the blade of Prashant. Very straight indeed, down to deep long off boundary for 4 runs. I think the batsman is too clever, choosing the right area where there is no water at all. We can see that there's a little bit of grass out in the deep long off region. Hitting that vacant area quite nicely, picking up the line and length, picking up that gap quite beautifully. And scoreboard now 19 for the loss of 1 wicket. Another 16 more runs required for the victory. Slower one. Ball is missed the stumps. And the very slower one in that again from the bowler Satya Prasad. Bowled all along the carpet. Slower one. Just
testing the temperament of the batsman. Again, the slow ball, the batsman looking for the drive, but just only a single for the batsman. So, with the addition of that single, scoreboard numbers on to 20 now for the loss of 1 wicket. Another 15 more runs required for the victory. The over number 30 is in progress. Satya Prasad. Right arm over the wicket, delivers. This time lovely reverse stroke, beautifully played. The ball is really travelling out here with the power what the batsman Varun has got. His second boundary in this over and a completion of over number 3 in fact. Their classic cricketers their classical performances continues in this match as well. This is a very good sportsman spirit shown there by the batsman, Prashant and Mukesh. Just giving hand for Satya Prasad, Prashant and Varun Shanbag, because of course there is no excuse. Even the age is definitely not really going to consider against the talents, because sometime the bowlers, the bowlers like Satya Prasad, they're definitely going to be very effective. And both the batsmen actually just shaking their hands and showing the true spirit of cricket, because that's very important, because this is very important for the players like Satya Prasad not to lose the confidence after hitting the boundaries. Maybe that's the main reason that the two batsmen having a little bit shaking the hand, giving them, it's okay man, you can be the future player for your team. Just go on, and that's what really the good message which is coming from the batsmen of classic cricketers. This time nicely driven, beautifully down to mid-wicket region. They're looking for the second, but this time a very good collection and return coming from the fielder in the deep mid-wicket region. And the scoreboard numbers on to 25 for the loss of 1 wicket. Just 10 runs required for the victory from 17 deliveries. And looks like classical cricketers, they are very much in their target. The right track of winning this match. Vinayak. Team A, B and C. So the team which is from Bantwal. This time we loved it. Can you believe that? This is what your true power of this man. He nearly not bother about where the ball is, the raining out here, anything. But he is the one. He's lost his powerful struck. Absolutely magnificent struck straight over the commentator ropes for the youth 6, and score jumps into 31 for the loss of 1 wicket. What a tournament he's got. Varun from the bat. Vinayak, right arm over the wicket, delivers, looking for the reverse stroke, but this time he didn't got bat onto that, but he able to pick the singles. So over to coming up here, and they completed a couple of runs, and even they're looking for the third, but umpire signal is a leg by and missed everything in that occasion unless the ball is hitting the leg of the batsman. Scoreboard now 33 on the board. Now 2 runs required for the victory. Vinayak. Again, Varun wanted to finish the match in a style by hitting his favorite reverse stroke. But this time as a bowler not really settled the batsman for that reverse stroke, and there is no possibility of any run at all. Vinayak. Just coming back to TV, A, B and C or A, B and G. This time I think he will going to be out. And Varun Shanbag wanted to finish the match in a style. Last ball remaining in this over of Vinayak. And the very good innings comes to an end of Varun Shanbag. Once again, he is the big hunter of the runs in this particular tournament. The successful run is continues in this match as well, even though he couldn't manage to finish the match, but he brought his team almost near to the victory. Just 2 runs required for the victory. Radhakrishna, the little master, is walking towards the middle. Just 2 runs away from the victory. The over number 4 in progress. Varun Shanbag, who scored 15 valuable runs in just 12 deliveries. Radhakrishna is on strike. Vinayak is the bowler.
Ball, that was a magnificent delivery. Looks like the wicketkeeper behind the stump. It completes the job and it's bowled out. It's gone. Across the line of the delivery side to swing that one and ball just mid the middle and off stump of Radhakrishna and 2 wickets for Vinayak in the final 2 deliveries of the over. So classic cricketers have to wait for another over to get their victory run of 2 runs. For the next match, I request both the teams please get ready. The match number 13 of the day number 1. Tank Cobra will going to take the challenge of Jai Hind Games Karkal. Jai Hind Games Karkal captain won the toss. They elected to field first. So time exactly 9:30. Satvik starts with the delivery which is called as a no ball. So pitched outside the pitch so that umpire rightly so Pushparaj called that's a no ball. Free hit delivery. Scores are equal. The run and this time is going for the big one and he got a big one as well. He finished the match in a style. The Prashant finishing the match with the 6 for his team and classical cricketers. Their classical performance continues in this day number 1 of this prestigious GPL 2022. Registering there the 3rd victory, defeating ABNG Bantwal. Comprehensive victory by 7 wickets and they're grabbing all points here. So congratulations ABMC, of course congratulations for classic and hard luck ABNG Bantwal. Even though they tried hard to win the match, but against a formidable team like classic cricketers Kakal, it's very difficult even to depend 35 runs in this condition. नेक्स्ट मॅच वरद पांडुरंग आणि पडू तिरुपती क्रिकेटर्स कारकळाजी मध्ये जावचे आसा. आयची दिसाच्या लास्ट मॅच. 2 टीमाचे कॅप्टनान हांगे टीम रजिस्ट्रेशन करक म्हण निमून घेता आसा. तशी जी कमेंट्री बाक्स इंದ 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಇದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಂತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 11 ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 12 ರ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The previous match, man of the match, the match between team ABNG versus Classic Cricketers. I think once again the Varun is hunt is continues as a man of the match because he is the one who scored 15 valuable runs in just 12 deliveries and he got 1 wicket. So that once again the Varun Shanbag who judged as a man of the match. I request Varun Shanbag again, please collect your man of the match and we are going to announce soon that the previous match man of the match. We are talking about the 11th match man of the match and Sachin Kamath will go in to tell you that the man of the match, the match number 11. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 11 ರ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾರು? We'll go into announce soon little bit
2 minutes. Okay, thank you. धन्यवाद सतीश. तो मैच नंबर 13 is now going to begin of this tournament between Jai Hind Games Karkala versus Tank Cobra. तो मैच नंबर 13 इस श्रृंखला का शुरू होता हुआ और जय हिंद गेम्स ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्ड करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है. So, man of the match of the match number 11 of this tournament the award goes to Manjunath, who scored unbeaten, who scored 31 runs in just 17 balls, and because of that fantastic knock, he will be selected for the man of the match. I request Mr. Manjunath of Deadly Panthers to please go on to the dais and receive the man of the match award from the organizers. Manjunath of Deadly Panthers, who scored 31 runs in just 17 balls, and because of that splendid batting performance, he bagged the man of the match award. So match number 13 is now going to begin. And the first ball of the match is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार राघवेंद्र विनायका. पहली गेंद को इस वक्त उछाला डीप मिड विकेट पर और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है. नहीं देखना पड़ेगा, वहां पर पानी रहने की वजह से गेंद वहां पर रुक चुकी है और जब तक फील्डर गेंद को वहां पर जाकर उठाएं और इस बीच अंपायर इस वक्त घोषित करते हुए चौके का. तो 4 रन इस वक्त मिल चुके हैं. गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी थी और उसके बाद रुक चुकी थी और इस चौके के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है टैंक कोबरा के लिए. नरसिम्हा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार. नरसिम्हा ने पिछले मैच में बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था और इस मैच में भी उस सफलता के सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश में मैच की पहली गेंद को चौके के रूप में वो डिस्पैच कर चुके हैं डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. राघवेंद्र अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई और यह गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई. वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड किस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. अगली गेंद इस बार बेहतरीन गेंद थी. इस वक्त लगभग स्टंप से 1 या 2 इंच दूरी पर निकलती हुई सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. बेहतरीन गेंदबाजी और इस गेंद पर बल्लेबाज बाल बचते हुए. बेहतर गेंद थी. इस वक्त राघवेंद्र की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई. विवी क्रिकेटर्स आणि डेडली पॅन्थर्स मॅचच्या मॅन ऑफ द मॅच घेऊच्या का डेडली पॅन्थर्स आज मंजुनाथ ताणेंगा मेन स्टेज आरे का 11th मॅच विवी क्रिकेटर्स आणि डेडली पॅन्थर्स मॅचच्या मॅन ऑफ द मॅच घेऊच्या का डेडली पॅन्थर्सच्या मंजुनाथ. और लाइन के बाहर गेंद टिप्पा खाई थी, इस वजह से इस लेग बिफोर अपील को नकार दिया अंपायर ने सही तरीके से. लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर. निस्संदेह एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त सख्त जरूरत है टैंक कोबरा को अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है. तो ये गेंद इस बार गेंद को खेला मिड विकेट पर. फील्डर मौजूद. मिसअंडरस्टैंडिंग एंड दैट मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पवेलियन. पहले नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज दौड़े और वो वापस जब लौट गए तब स्ट्राइकर के बल्लेबाज ने दौड़ना शुरू किया और आखिरकार दोनों बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की बदौलत ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका है नरसिम्हा के रूप में और स्कोर है इस वक्त 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 6 विद लॉस ऑफ 1 विकेट. नेक्स्ट मॅच वरद पांडुरंग आणि पडू तिरुपती क्रिकेटर्स 2 टीमांचे कॅप्टन आणि टीम रजिस्ट्रेशन मेन स्टेजला येऊन निमून घेता असा वरद पांडुरंग आणि पडू तिरुपती क्रिकेटर्स. So Tank Cobra just lost their first wicket, unfortunately run out by Narasimha.
because of misunderstanding, and they lose their first wicket in the total of 6 runs. New man, the number 3 batsman is now comes out to the middle for टैंक कोबरा प्रकाश पई, जो इस वक्त स्ट्राइक एंड पर मौजूद सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद ड्राइव किया, विकेट हटते हुए मिड ऑफ पर मिसफील्ड, और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने 1 रन तेजी के साथ चुरा लिया और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और राघवेंद्र का जहां तक सवाल है, अगली गेंद इस वक्त लेकर तैयार, स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए विनायक विजय राज, माफ कीजिए, स्ट्राइक लेते हुए लेग स्टंप पर आते हुए स्वीप करना चाहा, चूंकि लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलती हुई वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट राघवेंद्र विजय राज के लिए। अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त गेंद को मोड़ दिया, गेंद पहुंचे मिड विकेट पर, 1 रन का इजाफा, निशाना डायरेक्ट टकराया था स्टंप्सों पर, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज पहुंच चुके थे और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, एक्सेप्ट दे लॉस्ट देयर फर्स्ट विकेट, दे मेड अ प्रीटी गुड स्टार्ट। 9 रन स्कोर्ड इन द फर्स्ट ओवर फॉर टैंक कोबरा। So next match, the 14th and the last match of the day 1 of this tournament will be played between Varda Panduranga versus Padu Tirupati cricketers, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. So back to this game, match number 13 is now progressing here. 1 over bowled in Tank Cobra's innings, 9 runs scored, 1 wicket lost. और दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ होता हुआ, गेंदबाज वरुण नायक गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, प्रकाश भाई इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और फील्डिंग में जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार वरुण राज, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर मोड़ना चाहता विजय राज, बल्लेबाज थे, रन साइड पर मोड़ने के प्रयत्न में चूके गेंद उनके पैर पर टकराई, लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलते हुए और रन से इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। 9 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और वरुण एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, मच स्ट्रेटर लाइन एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन। हालांकि विकेट कीपर ने तेजी के साथ गिल्ली अब बिल जरूर उड़ाए, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए वरुण 2 लगातार डॉट गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाज विजय राज के लिए। और एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद, ओह दैट इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, फ्लाइटेड गेंद थी, टॉस की गई थी, गेंद का पीछा करना चाहा, जस्ट वांटेड टू फॉलो दैट वन एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन गेंद उनके बल्ले को वंचित करती हुई, बीट करती हुई सीधे निकल गई विकेट कीपर के हाथों में। भाग्यशाली रहे कि बल्ले का बाहरी किनारा नहीं टकराया। और एक बेहतरीन गेंद इस वक्त फेंक चुके हैं वरुण, 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं और गेंदबाजी के जरिए एक बेहतर शुरुआत वो कर चुके हैं। अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार चूके विकेट कीपर के हाथों में, कट बिहाइंड द विकेट, और इसी के साथ दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। विजय राज की पारी समाप्त, उछालना चाहता लेकिन अंतिम क्षण में बल्ले के पास आते हुए गेंद ने कुछ ज्यादा उछाल ली और टॉप एज पर गेंद टकराई और विकेट कीपर ने विकेटों के पीछे गेंद को लपक लिया और इसी के साथ विजय राज की पारी पर पर्दा गिर चुका है और दूसरा विकेट यहां पर खो चुका है टैंक कोबरा 9 रनों के ऊपर। इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। एक
प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला जीएसपी प्रीमियर लीग 2022 अंडरआर्म क्रिकेट प्रतियोगिता का पहला दिन का 13वां मैच यहां पर खेला जाता। वकोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने इस श्रृंखला की शानदार प्रस्तुति की है। ब्रॉडकास्ट पार्टनर है यूथ ऑफ जीएसबी वर्ल्ड वाइड। और यहां पर इस देर रात में 9:45 बज चुके हैं। वर्षा अभी भी मैदान पर बरसती हुई और इस वर्षा तले अंडर फ्लड लाइट्स ये श्रृंखला यहां पर एक बेहतरीन प्रगति करते हुए। और जहां तक नए बल्लेबाज का सवाल है, अनिरुद्ध इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में इस बार जस्ट वाइड ऑफ द बॉलर। गेंद को हवा में खेला था लेकिन गेंदबाज के पहुंच से बाहर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज वरुण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, फुल टॉस, स्क्वायर ऑफ द विकेट, पंच किया लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में एक्स्ट्रा कवर पर। प्लेसमेंट बिल्कुल गलत है और जहां पर फील्डर खड़े हुए थे ठीक उन्हीं के पास गेंद पहुंची और उन्हें कुछ ज्यादा इस वक्त शरीर को इधर उधर करना नहीं पड़ा, सीधे गेंद उनके हाथों में पहुंची और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। प्रकाश भाई की पारी समाप्त। संकटमय स्थिति में इस वक्त नजर आता हुआ टैंक कोबरा 10 रनों पर 3 विकेटों को खो चुका। सिर्फ 1 रन इस ओवर में वरुण ने प्रदान किए और 2 महत्वपूर्ण सफलताओं को वो अर्जित करने में सफल। और उनकी इस बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत अब परेशानियों के बादल टैंक कोबरा के बल्लेबाजों के ऊपर मंडराते हुए। 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी और तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ। अनिरुद्ध इस वक्त नए गेंदबाज के रूप में मोर्चे पर लगा दिए गए हैं। और अनिरुद्ध गेंदबाज जो कि इस वक्त गेंदबाजी करेंगे अनिरुद्ध बल्लेबाज को, तो अनिरुद्ध के लिए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए और तैयार। 10 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ मोड़ दिया। इस वक्त मिड विकेट पर फील्डर पीछे, इस वक्त 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरे रन के लिए स्पिनर वहां पर फिसल कर गिर चुके हैं फील्डर, लेकिन गेंद को थ्रो करने में सफल हो सही तरीके से और आखिरकार 2 रन यहां पर पक्ष में। और जहां पर गिली आउटफील्ड है, देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था। ही जस्ट स्लिप डाउन एट द लास्ट मोमेंट बट ही कलेक्टेड द बॉल एंड थ्रोइंग द बॉल वेरी क्विकली इन द एंड। और 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर। इनफैक्ट अनिरुद्ध के लिए गेंदबाज अनिरुद्ध, बल्लेबाज भी अनिरुद्ध और अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए विकेट कीपर चूके वाइड का इशारा, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज काफी आगे निकल आए थे लेकिन अंतिम क्षण में एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित और वाइल्ड इस वक्त घोषित की जा चुकी है। 13 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 13 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3rd इन प्रोग्रेस इन टैंक कोबरा इनिंग्स। निस्संदेह जहां तक एक साझेदारी पार्टनरशिप का सवाल है, इस वक्त टैंक कोबरा को जरूरत है एक बेहतर साझेदारी के जो उन्हें एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर रख कर सके। अनिरुद्ध ऑफ कटर गेंद ऑफ द बैकफुट, पंच किया खूबसूरती के साथ, एक्स्ट्रा कवर पर स्वीपर मौजूद और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद अनिरुद्ध और నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ట్యాంక్ వరద పాండురంగ అని పడు తిరుపతి క్రికెటర్స్ వరద పాండురంగ చంగాయిలాచి ಪಡು ತಿರುಪತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅಜ್ಜ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅನ್ನಂಗ ಟೀಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗತ್ತಿರಿ ఒక ಮಂಡಿ ಮುನ್ಗೆತ್ತಾಸ ಪಡು ತಿರುಪತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅಜ್ಜ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅನ್ನಂಗ ಟೀಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟಾಸ್ ಆಗತ್ತಿರಿ ఒక ಮಂಡಿ ಮುನ್ಗೆತ್ತಾಸ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಲಗಿ। धन्यवाद। और यहां पर मुश्किल सा मौका जरूर था, पॉइंट पर आगे की ओर डाइविंग जरूर लगाई थी फील्डर ने लेकिन गेंद को लपकने में असफल और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। 15 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट और अनिरुद्ध
गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ रन के लिए दौड़ पड़े। शॉर्ट थर्ड मैन पर विकेट कीपर पीछे की ओर जाकर जब तक गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास समय था कि एक रन के साथ वो अपना छोड़ यहाँ पर बदल सके। 16 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4, 3 इन प्रोग्रेस इन फैक्ट। और अनिरुद्ध एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए 5वीं बार इस ओवर में गौरव सामना करते हुए इस वक्त स्वीप किया। इस बार फाइन लेग की दिशा में खूबसूरती के साथ अंतिम क्षण में गेंद को बल्ले पर आने दिया और बल्ले को मोड़ते हुए इस वक्त गेंद को स्वीप कर दिया शॉर्ट फाइन लेग पर। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। सेंसिबल क्रिकेट ये दोनों बल्लेबाज अपनाते हैं। वो जानते हैं इस वक्त मैदान काफी हद तक गीला हो चुका है, खुलकर स्ट्रोक्स खेलना काफी मुश्किल है, तो यहाँ पर वो ज्यादातर क्रॉस बैटेड स्ट्रोक्स इस वक्त खेलते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद चिपते हुए स्लिप डाउन पर रन नहीं मिलेगा, सीधे पहुंची गेंद स्लिप डाउन पर। ओवर की समाप्ति 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 ओवर्स कंप्लीटेड 17 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट फॉर टैंक कोबरा। 3 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi. 17 for the loss of 3 wicket after they got some runs in the first over, and one restriction is coming from the bowlers of Jai Hind Karkal. The 2 very good overs after that, and now they're bowling the 4th over of the innings of Tank Cobra. Nicely swept that one right in the gap towards the square leg region. They're running hard between the wicket, a little bit fumble from the field, and they're looking for the third as well. But this time they're going against that third run because the throw quickly coming from the deep square leg fielder. And with that couple of runs, Cobra now moves on to 19 for the loss of 3 wicket. The bowler, jersey number 45, Vignesh, will go into ball to the right-hander batsman Gaurav. Gaurav is a very good striker of the ball. Is a very key player for the side of Tank Cobra. Now looking for the single, but this time the wicketkeeper not happy with the Vignesh because he's just asking why you are collect the ball. I am just trying to hit the stumps. Your job is to collect the ball behind the stumps. But he wanted to try to collect the throw in front of the stump so that Gaurav just survived from that run out. And his batsman's got a single here, 20 for the loss of 3 wicket. And over number 4 in progress, Vignesh back to his bowling mark. Each and every run is going to be very crucial. Tank Cobra, after they lost the first match against VB cricketers, then they won the second match quite brilliantly. And they're back into the winning track. And they wanted to continue that track as well. Now umpire has got a little bit word with the Gaurav. Maybe he's talking about the running between the wicket is concerned. And again the Vignesh balls beautiful delivery outside the line of off stump, but well within the reach. Beautifully bowled there by Vignesh. Seeing that the batsman's intention to hit the ball on the onside region, he quite deliberately bowled that on outside the line of off stump, and the wicketkeeper behind the stump removes the bails, but no question of any damage here. And the score remains at 20 for the loss of 3 wickets. Good comeback here by Jai Hind Karkal bowlers so far. After that, 9 runs which just came from the first over by losing 1 wicket. The second over was beautifully bowled there by Varun. Just a couple of runs, just a single run conceded. And after that, Anirudh bowled beautifully. Now one more good delivery there from the bowler Vignesh, just testing the temperament of the batsman Anirudh, and Anirudh completely missed out that delivery. Right arm, that's a lovely sweep shot down to deep fine leg region. They're looking for the second. Even the batsman lost his balance in the non-strike end, but he still managed to continue that one. Recovered very quickly. A little bit slipped out when he was taking the first run very quickly in the non-strike end. Then once again he's coming back for the second run. So with that couple of runs, scoreboard now moves on to 22 now for the loss of 3 wicket. Intelligent cricket in the relegation there for Manirudh, seeing that he couldn't manage to hit the ball when the ball is outside the line of off stump. So he almost dragging that outside the line of off stump delivery to swap that one down to fine leg region.
Over number 4 is in progress. One fielder is brought very close to that batsman in the sense it is silly mid-off is in place. One is a cover point, it is very close to the batsman. There is one fielder that shot that man. Now one mid-on fielder going back to deep long on, and one fielder at square aggression inside the ring. Lovely delivery, beautifully balled. Once again, that was an excellent line to ball to the right-hander batsman. So one more good over is completed of completion of over number 4. And Tank Cobra searching for the right track scored at 22 runs for the loss of 3 wickets. Now they are remaining 2 overs and wait and see how many runs they will going to score. For the latecomers, you are watching match number 13. After this match, the last match of the day number 1 will be played between Varada Panduranga versus Padu Tirupati cricketers. That will going to be a last match of the day number 1 of this prestigious GSB Premier League 2022. And first match of the day number 2, final day of cricket, will going to start exactly at 9 a.m. morning tomorrow. VB Cricketers takes on Saptami Warriors. So that organizers requested both the team please be reported exactly half an hour before the playing time. That means both the teams have to report exactly at 8:30 a.m. tomorrow morning, which is the final day and decider day of cricket, and we're expecting more entertainment in that final day of this prestigious GPL 2022, which is proudly organized by Cordial Sports Association and broadcast partner Youth of GSB. Done a great job so far for this wonderful cricket GPL 2022. The first ball looks like it's called a dead ball. The batsman Gaurav is not ready. Lucky escape for the bowler because that ball pitched outside the leg stump. But definitely it's going to be a wide ball. And Raghavendra, and very happy to see that the batsman is not ready. And now he's bowling first delivery. Right arm over the wicket, delivers. This time looking for the big drive. Deflected from the leg of Gaurav Mohan Ayadi, signaling a leg bye. So far it's a very impressive. The part of this cricket tournament is the umpiring job, because even in heavy rain, even in heavy sunlight, these 3 umpires done a great job. This is a lovely improvising cricketing stroke there from the batsman, but the ball stopped because of the water in the outfield in the deep backward square aggression, so that the fielder has got opportunity to collect the ball. And here is opportunity for the batsman in the middle to complete a couple of runs. 25 for the loss of 3 wickets. A little bit grass out here. You can see that ball is not really traveling when the ball hits down the ground. But you can get some boundaries in the offside region. There is no that much of water stopped out. And again, Raghavendra bowling with a short run up. Right arm over the wicket, bowled him, cleaned him up, looking for the improvising cricketing stroke, and Anirudh's innings comes to an end. Try to repeat that stroke, but this time bowler too quick. The quick enough to beat the bat of the batsman. So wicket number 4 is back into pavilion. The 4th wicket is back into pavilion at the score of 25. The over number 5 is in progress. So good progressing here for as far as the fielding team is concerned. After that 9 runs which came in the first over. Then we can see the one did 13 runs conceded after that in 3.3 deliveries. 3.3 deliveries. They only conceded 16 runs. This time a tossed up delivery, just inviting the batsman to go for the big shot. And Dilip is a new batsman, not really able to take the advantage of that delivery. And because of that wet ball, and very difficult for the batsman to grip the handle of the bat as well. So 26 for the loss of 4 wickets. Raghavendra. This time he lofted and he got the wicket. No, it's a 6. Magnificent struck there from Gaurav. Look at the crowd here cheering that 6. Why not? Under this condition, when the raining is out here in UCG cricket ground, it's how difficult for the batsman hitting the maximum here. And that was a magnificent struck from Gaurav to pick the 6. I already mentioned he is the one who is a very good striker of the ball.
the key player for Tank Cobra, and little bit excitement coming from the player dugout of Tank Cobra, and he just wanted to tank the Gaurav for that big stroke which is came from the back blade of Gaurav. 32 for the loss of 4 wicket. Again he tried to repeat that stroke, this time beautifully played that one again. Unfortunately ball is stopped and they cannot stop Gaurav to complete that couple of runs. They're going for the third as well. This is excellent, but umpire says no, it's not a run. Umpire Mohan Ayyad is just asking the batsman need to settle for the couple of runs. No 3 at all, just a couple of runs. With that couple of runs, Coburn moves on to 34 for the loss of 4 wicket. So expensive over, productive over for Tank Cobra. Five overs completed. The last over will going to start from the commentary box end. Now wait and see. Any run which is scored in this last and final over, definitely going to be a bonus run for Tank Cobra. Another 6 to 8 runs. It's definitely going to be a good score to depend in this condition. If the ball as per the condition of the pitch and the weather, then it's going to be a good score to depend for Tank Cobra. And wait and see how Tank Cobra will going to get some runs here. And what innings is playing here? Gaurav along with the Anirudh is actually contributed well. Scored 9 valuable runs in 11 balls. The first ball driven out of the reach of that backward point fielder. Again they're running hard for the second and looking for the second, and they completed very well. Even they're going for the third as well, and they completed. Everything is going wrong here for the fielding team, but everything is going positive here for the batting team. They're really enjoying the running between the wicket. The 3 valuable runs here. What could be a certain single because of excellent running between the wicket? They got 3. 37 for the loss of 4 wickets. We can see that the batsman is a little bit having a little extra work to dry the ball. So maybe some excitement coming from the dressing, even that players dugout of Tank Cobra, that they need to dry the ball if you wanted a big shot here. And here is a bowler bowling right arm over the wicket. This time try to force that one Gaurav, but this time is need to come back to pavilion, because I think the wicketkeeper behind the stump completes the job. The wicket number 5 is back into pavilion. Yogananda in delegation bowled a very good line, seeing that batsman tried to using his feet, but wicketkeeper behind the stump, so quick behind the stump, completes the job in a fraction. 37 for the loss of 5 wicket. So new batsman in is Sujit. Is walking towards the middle, but Gaurav will definitely going to get a standing ovation where he is batted under pressure, scoring some runs, and 1-6, which is really lifting the spirit of their team in this condition. So 37 for the loss of 5 wickets. Last 4 deliveries remaining in their innings. Yogananda, right arm over the wicket, delivers. Sujit, a nice paddle shot down to square leg division. They're looking for the second. In comes the throw. One more wicket, just an a suicider. This is definitely the suicider, because no question of second run. After that ball went straight to the hands of that square leg fielder. Look at that, his effort, single and pick up and throw, and straight over the bails, and the wicketkeeper just complete the formalities of removing the bails. And wicket number 6, which is back into pavilion. 38 for the loss of 6 wicket. In the over number 6 is in progress, and last over is in progress. One more good innings comes in end, as Dilip, even though he got only 4 runs, but he is responsible for the partnership, and he is run very well between the wicket with his partner Gaurav. Now 2 new batsmen are in the middle. The new batsman walking towards the middle. Lakshmish. Lakshmish with the jersey number 27, 27. 2 plus 7 is a 9. Sometimes it's going to be a numerological
calculation. This time, that really not going to be helped as one more wicket is back into pavilion. 38 for the loss of 7 wicket. Just using his fate again, but not really enough to clear that field. A deep long off takes a comfortable catch. So one more wicket is back into pavilion. That means the bowler Yogananda is got an opportunity to pick the hat trick. Already there is a one hat trick so far in this tournament, which is taken there by Raghavendra. Little bit correction in between actually. There's not a hat trick delivery. 1 wicket and 1 dot ball, then 1 wicket. Varadaraj of VV cricketers. Little bit correction. This time he lofted down to deep cover point region. They're looking for the second. Excellent throw. Absolutely good throw indeed. And just a formality is completed the wicket keeper because of that fantastic throw coming from the fielder in the deep extra cover. The very young talented fielder out there in the deep extra cover. Look at that one in the replay. That's a really good throw indeed. There's no question of the batsman to survive from that throw from the deep extra cover fielder. The 8 wickets are back into pavilion of Tank Cobra. This is turning out to be a very good over from Yoga Nand. He considered 3 runs in the first delivery. Then look at that, his effort. Absolutely perfect, isn't it? Then he considered only a single run. And now last ball remaining of this over. Rahul is a new batsman in. 39 on the board for the loss of 8 wicket. Right, a more wicket delivers. Rahul turns that one on the square leg region, not more than a single, looking for the second. There's no question of second run, but Sujit knows that dealing with the final delivery, why not trying for the extra run? But it's too late as wicket number 9 is back into pavilion. So completion of over number 6. The total score is 40, exactly 40 is the total score of Tank Cobra, and they set a target of 41 to win the match for the opposition. Jai Hind Karkal to win the match, and wait to see how well and Jai Hind Karkal will going to get this 31 runs to win the match, just under 7 runs per over the required run rate, and wait and see how well Tank Cobra will going to restrict the runs, and wait and see how well Jai Hind cricketers Karkal will going to get this runs. It's going to be a very interesting session of this final session of this match. And before the innings will going to start, we can see in the big screen of this YouTube channel of M9 Sports and the 41 runs which is required in the remaining in the 36 deliveries, and with the help of 10 wickets they have to get the runs. Before the innings will going to start, I would like to welcome Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you.
धन्यवाद सतीश. So 41 the target for Jai Hind Games Karkala, set by Tank Cobra. Batted first, they managed to score 40 runs on the board in the stipulated 6 overs for losing 9 wickets. And they set a victory target of 41 for Jai Hind Games Karkala. Just under 7 runs per over. What my friend Satish mentioned, they have to score for victory. That means in exactly calculation 6.83 runs per over they have to score for victory. And their innings now going to start. और उनकी पारी की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार अनिरुद्ध, जबकि स्ट्राइक लेते हुए कार्तिक, नॉन स्ट्राइकर एंड पर राघवेंद्र मौजूद. पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ. और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज अनिरुद्ध, और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी. इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को पंच किया. इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर जब तक गेंद को फीड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. द्वितीयार्ध मैच नंबर 13 इस श्रृंखला, इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर शुरू हो चुका है. और पहले गेंद पर जय हिंद के बल्लेबाज की ओर से 1 रन यहाँ पर बन चुका है. मिड ऑफ फील्डर को इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर पीछे भेजा गया है. और गेंदबाज इस वक्त तैयार अनिरुद्ध, गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज राघवेंद्र के लिए. ऑफ स्टंप से काफी बाहर दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रन बिना किसी नुकसान के. निस्संदेह बेहतर शुरुआत की इस वक्त सख्त जरूरत जय हिंद कारकला को. अगर इस बार इनटू द गैप एज वेल, गेंद को निकाला इस वक्त कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे. गेंद अपने रफ्तार को खोने के बाद जब तक डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्ड हो, 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है. ऑफ द बैकफुट खूबसूरती के साथ गेंद इस वक्त पंच किया था. कवर और एक्स्ट्रा कवर 2 फील्डरों के बीच में से बल्लेबाज राघवेंद्र ने, और 2 रन यहां पर बटोरने में सफल. और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के. जबकि उनकी पारी का पहला ओवर प्रगति पर. यह गेंद ड्राइव किया लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर मौजूद वहां पर, नॉट मोर देन अ सिंगल. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रन बिना किसी नुकसान के. प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस क्रिकेट श्रृंखला जीएसबी प्रीमियर लीग अंडरआर्म क्रिकेट प्रतियोगिता का आज का पहले दिन का 13वां मैच खेला जाता हुआ. गेंद को इस वक्त खेला, एक्स्ट्रा कवर पर निशाना चूका, और इस बीच बल्लेबाज अपना बल्ला जरूर खो चुके हैं लेकिन रन पूरा करने में सफल. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 6 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और गेंदबाज अनिरुद्ध गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. यह गेंद इस बार गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, 1 रन मिलेगा. बल्ले का अंदरूनी किनारा यहां पर टकराया था, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं. 7 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के. 7 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. अनिरुद्ध इस बार खूबसूरती के साथ एक बार फिर से गेंद को निकाला है, लेकिन गेंद अपनी रफ्तार को यहां पर खो चुकी है. और 2 रन इस बीच बल्लेबाज और टीम को मिलेगा. और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 9 विदाउट लॉस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर. और जहां तक सवाल है 41 रन उन्हें बनाने हैं. अगर 41 रनों से 9 रन अगर घटा दिया जाए तो 32 रन अब उन्हें बनाने. 32 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 5 overs with the required run rate of exactly 6.40 runs per over. और इस बीच 5 ओवर का खेल अभी भी बाकी. और दूसरा ओवर यहां पर गेंदबाज कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से प्रारंभ करते हुए राहुल 21 नंबर की जर्सी यहां पर पहने हुए. और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. रात के 10:15 यहां पर बच चुके हैं. और इस श्रृंखला का 13वां मैच, 13th मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट यहां पर प्रगति पर. इस मैच के बाद 14वां और अंतिम मैच आज का खेला जाएगा वरदा पांडुरंगा और पडु तिरुपति क्रिकेटर्स के बीच में. तो इसलिए मैं कृपया दोनों टीमों के सदस्यों से दरख्वास्त निवेदन करता हूं कि कृपया अगले मैच के लिए तैयार रहे. प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए फील्डिंग में जमावट करते हुए पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहां पर हट चुके हैं. और पावर प्ले समाप्त हो चुका है. और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए लगभग 4 घंटे से बारिश लगातार
यहाँ पर हो रही है। 6:15 को बारिश शुरू हुई थी, अब 10:15 बज चुके हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम यहाँ पर नहीं ले रही है। और इस वर्षा तले यहाँ पर ये श्रृंखला आगे बढ़ती हुई, इस बार गेंद को ड्राइव किया था गेंदबाज की दाईं ओर से, लॉकऑन पर 1 रन का इजाफा, 2 अंकों पर स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 10 रनों पर। लेग स्टंप से बाहर और विकेट कीपर के हाथों में गेंद, वाइड का इशारा, लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए, और स्कोर इस वक्त जुड़ चुका है 1 रन उनके खाते में अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट पॉइंट पर रन के लिए दौड़ पड़े और थ्रो काफी ऊंचा, विकेट कीपर के पहुंच से बाहर, और 1 रन जोखिम भरा 1 रन सफलतम यशस्वीतम यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर प्रगति पर, द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन, बराबर का संघर्ष यहाँ पर जारी है, और अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ये गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को मोड़ा खूबसूरती के साथ मिड विकेट पर, गेंद वहां पर पानी में जाने के बाद रुक चुकी है अपने रफ्तार को खोकर, और जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करे पीछे की ओर जाने के बाद बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। हर गेंद पर रन बनाना इस वक्त जरूरी बन चुका है बल्लेबाजों को। इस बार गेंद को साइड पर मोड़ना चाहा चूके, और गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे लेग स्टंप पर जा टकराई, और इसी के साथ यहां पर पहला विकेट गिर चुका है। कार्तिक की पारी समाप्त, सफल होते हुए गेंद को साइड पर मोड़ना चाहते थे, देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था, मॉनिटर पर दिखाई दे रहा है, और गेंद कुछ ज्यादा हद तक अंतिम क्षण में अपने रफ्तार को वृद्धि करती हुई सीधे बल्ले और पैर को चीरती हुई निकली, सीधे लेग स्टंप पर जा टकराई, गिल्लियां बेल्स ऑफ होते हुए, और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। कार्तिक की पारी समाप्त, 13 रनों पर पहला विकेट खो चुका है यहां पर जय हिंद गेम्स कारकड़ा। इट्स 13 for 1 इन द सेकंड ओवर। तो अनिरुद्ध का आगमन यहां पर होता हुआ नंबर 3 बल्लेबाज के तौर पर, और वो इस वक्त सामना करेंगे गेंदबाज राहुल की ओवर की गेंद का। ये गेंद अच्छी गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन फ्रॉम द बॉलर, लगभग ऑफ स्टंप से कुछ इंच दूरी पर गेंद निकलते हुए भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की गेंद स्टंप्सों पर नहीं टकराई, और इस गेंद पर बल्लेबाज बाल बाल बचते हुए, और इस बीच बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए इस वक्त गेंदबाज अनिरुद्ध, माफ कीजिए गेंदबाज राहुल, और 1 गेंद इस ओवर में बाकी, लास्ट बॉल रिमाइनिंग दिस ओवर। अगली गेंद इस बार बेहतरीन, हालांकि इस गेंद का फायदा उठा सकते थे, लगभग ढीली गेंद थी, लेकिन अंतिम क्षण में ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन टू अर्ली, गेंद के धीमेपन को समझ नहीं पाए, और आखिरकार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में। सिर्फ 4 रन इस ओवर में राहुल ने प्रदान किए, 1 विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया, और 2 ओवर के बाद स्कोर है इस वक्त 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 13 for 1 आफ्टर 2 overs, 28 टू गेट इन रिमाइनिंग 24 डिलीवरीज। देखिए मॉनिटर पर इस वक्त दिखाई दे रहा है 24 गेंदों में 28 रन बना रहे, ठीक 7 रन प्रति ओवर के औसत से, और 9 विकेटें सुरक्षित था इस वक्त जय हिंद गेम्स कारकड़ा के लिए। और जहां तक मैच का सवाल है, स्टिल आई मस्ट से, मैं अभी भी कहूंगा इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन, बराबर का संघर्ष यहां पर जारी है, और तीसरा ओवर यहां पर शुरू होता हुआ गेंदबाज सोहन द्वारा, और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज राघवेंद्र। 28 टू गेट नाउ इन रिमाइनिंग 24 बॉल्स। सोहन पहली गेंद लेकर तैयार, फील्डिंग में जमावट करने के बाद, और राघवेंद्र इस वक्त सामना करते हुए, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, स्टार्ट्स ऑफ विद अ वाइड, 1 रन का इजाफा, 14 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर इन फैक्ट। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त सोहन गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद ओह एब्सोल्युटली टेरिफिक वन, इट टर्न्ड अ लॉट देन द बैट्समैन एक्सपेक्टेड, और गेंद बल्ले को वंचित करते हुए सीधे जा टकराई मिडलर ऑफ स्टंप पर। गेंद बल्लेबाज ने जितना पूर्वानुमान लगाया था उससे ज्यादा टर्न लेते हुए इस गीले पिच पर गेंद ज्यादा टर्न लेते हुए सीधे बल्लेबाज को वंचित करते हुए जा टकराई मिडल ऑफ स्टंप पर, गिल्लियां बेल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ यह विकेट नंबर 2 यहां पर गिर चुका है। राघवेंद्र की पारी समाप्त, 7 रन उन्होंने बनाए, और आखिरकार आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए
6 रन राघवेंद्र ने बना. He scored 6 runs into his credit. In 6 runs in 7 balls, and he is backing to pavilion, and a second wicket loss for Jai Hind Games Karkala. सोहन विकेट प्राप्त कर चुके हैं. The new batsman, the number 4 batsman is now comes out to the middle for Jai Hind Karkala. श्रीनिवास इस वक्त सामना करने के लिए तैयार सोहन की गेंदों का. सोहन ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा शॉर्ट थर्ड मैन पर, और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करे अपने आगे की ओर आने के बाद 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 15 2 विकेट के नुकसान पर 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन. 26 रन और चाहिए विजय के लिए, और गेंदे बाकी हैं 22. 26 टू गेट फ्रॉम 22 डिलीवरीज नाउ. ऑफ स्टंप से बाहर कैच छूटा हवे में, लेकिन गेंदबाज के लिए मौका, निशाना टकरा चुका है यहां पर, और इस बीच अंपायर इशारा कर चुके हैं थर्ड अंपायर की ओर. तो देखने वाली बात यह है कि जब विकेटों पर निशाना टकराया था, गेंद टकराई थी, तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं, और देखते हैं यहां पर अंपायर क्या निर्धार देते हैं. नो डाउट इज द कॉल. और जब स्टंप्सों पर गेंद टकराई थी तब बल्लेबाज अपना बल्ला बैट क्रीज पर लैंड कर चुके थे, और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित था बल्लेबाज के लिए, और स्कोर यहां पर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. और यहां पर सोहन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. श्रीनिवास इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई, और एक्स्ट्रा कवर फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. और सोहन अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद को छोड़ दिया. ये पूर्वानुमान लगाते हुए कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन गेंद कुछ ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी. सही गेंद कोशिश, सही निर्णय अंपायर द्वारा. डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ 16 रन बन चुके हैं. 16 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 2 विकेट के नुकसान पर. सोहन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए श्रीनिवास के लिए. यह गेंद इस बार गेंद को खेला पॉइंट पर, थोड़ा सा मिस जजमेंट. 1 रन मिलेगा इस बीच, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर. नॉट क्वाइट मिटिगेटेड द लास्ट मूवमेंट फ्रॉम द बैट्समैन, बट ही गेट्स अ सिंगल फॉर दैट. और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर. M9 स्पोर्ट्स चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है इस वक्त, बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पर. और यहां पर बेहतर गेंद थी, पैरों पर गेंद टकराई, सर्टनली गोइंग डाउन द लेग साइड, और यहां पर अपील को नकार दिया अंपायर ने सही तरीके से. 3 overs completed, 17 for the loss of 2 wicket, 24 to get in remaining 18 deliveries. That means in remaining 3 overs, and the asking run rate is now gone up to exactly 8 runs per over. 24 to get from 3 overs. That means in 18 deliveries. और देखते हैं बचे हुए 3 ओवर में जय हिंद गेम्स कारकला की पारी में क्या क्या होता है. और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए अंग्रेजी में सतीश को. आइए सतीश, धन्यवाद. थैंक यू.
So thank you very much, Gopi. So 17 for the loss of 2 wicket after completion of over number 3. That means 18 balls remaining and 24 more runs required for the victory for Jai Hind Kakal. The equal battle is on, and the first ball right arm over the wicket delivers. A much required dotted delivery. This is a key player for the side of Tank Cobra. The bowler just came into middle, Rahul. Rahul is known to be the little master of Tank Cobra, who can bowl, you can handle the pressure in the slog overs. This time inside out cricketing stroke, nicely driven by the batsman Srinivas to pick the single down to deep extra cover region. 18 for the loss of a 2 wicket. And now Rahul just drying his hand, drying the ball as well, because it's a very difficult sometime for the spin bowler to grip the ball. But as far as this particular tournament is concerned, I think the organizer really chose the very good ball for this particular tournament. Even that the wet condition, the balls are really traveling here, and that's why the main the part of this success of this cricket tournament, that choose that very good ball for this condition, the rainy condition. So 19 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. Rahul once again back to his bowling. He's not really bothered about that single. You know exactly in this particular over, he need to restrict some big stroke like boundaries and a couple of runs. And here is Rahul, right arm over the wicket to Srinivas. This time again, nice looking drive there for Srinivas. He's so good in that particular shot. Every time he's just waiting for the turn of the delivery off the back foot, drives that one down to extra cover region for a single. With that single, scoreboard moves on to 20 for the loss of 2 wicket. 21 more runs required for the victory in the remaining 15 deliveries. Little correction, 14 deliveries, little correction. 14-21. This time driven firmly down to deep long on region, but I don't think so any more than single for that. There is a fielder in the deep long on. So batsman Anirudh trying his level best to get the big stroke, but not really able to get the big stroke because of that line and length is so good there from Rahul, taking his own time. 21 for the loss of 2 wicket. Now the 20 runs which is required for the victory in remaining 13 deliveries. One big stroke can change the complexion of the match. This time again, Srinivas inside out, beautifully that plays it down off the back foot, square cutting that one. Quite unfortunately, he's fell down, lost his bat from the hand, Srinivas. So that there will be opportunity of second run, but it's not really able to run in that occasion. So good over there from Rahul, excellent over. And in this particular over, he conceded 5 runs. And now it's the last 2 overs remaining, 12 balls and 19 runs required for the victory. 12 balls, 19 required. The difference between run and ball exactly the 7, and asking run rate is exactly 9.5 runs per over. The last and the final match of the day number 1 will be played between, that is the 14th match, and the 14th match will be played between Varada Panduranga versus Padu Tirupati cricketers. And it's going to be one more good match, except 2 very good teams will go into clash in the final match of the day number 1. And wait and see which team will go into win this match. Meanwhile, after completion of toss, Varada Panduranga won the toss. They elected to bat first. Now, so Lakshmi Shah bowled very well in the first over, and now he's bowling with a very important over for the winning perspective of Team Cobra is concerned. This is definitely going to be a very crucial over for them to restrict the runs. But at the same time, for Team Jai Hind Karkal as well, they need to get at least 9 to 10 runs if they wanted to take the match into the final over. Now it's only 1 run in the first over of the first delivery of the over number 5. That means 23 is the total score, and 18 more runs required for the victory in 11 balls. Anirudh back on strike. Lakshmi Shah, right arm over the wicket, past umpire. This time again set to the hands of fielder. A little bit misfield there, fumble by the fielder, but not more than a single. And Lakshmi Shah will not really bother about that single. Even the captain of Tank Cobra will not going to bother about the singles. 24 for the loss of 2 wicket. Another 17 more runs required for the victory in remaining 10 deliveries. Lakshmi Shah to Srinivas. Oh, that was a very good delivery indeed. Luckily that ball got inside edge of the bat.
Ball just missed the stumps. And before the fielder from short third man to run across towards the fine leg region, ample time for the batsman to complete the single. So with that single, scoreboard moves on to quarter century, 25 for the loss of 2 wicket, and 16 more runs required for the victory. 16 required in remaining 9 deliveries. The 3 balls, 3 singles. Anirudh is on strike, looking for the big right, the much required dotted delivery. The bowler and supporters of Tang Cobra will going to enjoy each and every dotted deliveries which is bowled by Lakshmisha in this particular over, because each and every dot ball taking them into near to the victory. But at the same time, each and every dot ball, it's definitely going to make the big difference between run and ball. Once it's going to be a big difference between run and ball, it's going to be difficult for the chasing team. One more dotted delivery. That's very close. Actually, it's a very close to that off stump. The Lakshmi's ball beautifully. Now last ball. That means 7 balls remaining. They have to get another 16 runs to win this match. 16 required from 7 balls. Little bit exchange of words between wicketkeeper and the bowler. Maybe they're talking about the strategy, not to lose that line and length what the wicketkeeper is talking about. But at the same time, the Anirudh, they wanted to hit some big shot if they wanted to be in the final over. This is a lovely shot to drive on that one, firmly down to deep long off region. It looks like the misfielder by the fielder, but recovered very quickly. So that just a couple of runs here for Anirudh there. And that was a form lead. I want to see that what really happened. That fielder is misfielded that one and recovered very quickly, and just inside the boundary, he managed to stop the boundary, and couple of runs here for the batsman, and scoreboard now moves on to 27 for the loss of 2 wicket after completion of over number 5. Now last over remaining, 14 runs which is required for the victory. You can see it in the screen here. Exactly the 14 which is required from 6 balls. And we need to thank all the technicians, the cameramans, those who are in the mixing department of Yum9 Sports. Definitely done a great job actually. Especially they done a great job as far as the quality of this cricket tournament is concerned, as a live telecast of this wonderful cricket tournament GPL 2022. And I think under the great leadership of Saujan, all the technicians, the cameramans have done a great job for the success of day number 1 of this prestigious GSP Premier League 2022. And broadcast partner of this cricket tournament, Youth of GSP, also done a great job for the success of this wonderful cricket tournament, GPL 2022 Underarm cricket tournament in this most beautiful and historical UCG cricket ground. And first time in the history that the monsoon trophies is played under the floodlight. Here is last over, 14 which is required for the victory, and misjudgment, absolutely misjudgment. This is a good thinking actually as the bowler's point of view. When you're bowling round the wicket, I think it's a very good line to bowl, which will going to confuse the batsman, the right-handed batsman, as Gaurav bowls round the wicket, just curving after ball pissed on the middle stump, and Lekatari bowls, and the misjudgment by the Srinivas. And here's a second delivery, right arm over the wicket. This time batsman drives that one. Srinivas down to deep wide-ish long on region. They're looking for the second. In comes the throw from the deep. Instead of hitting the stumps, the umpire, the fielder just aiming towards the umpire. Maybe the Mohan Arish Padil couldn't manage to escape from the throw from the fielder at the wide-ish long on. With that, single scoreboard moves on to 29 for the loss of 2 wicket in the over number 6 in progress. Now 4 balls remaining. The run required 12. That means each and every ball required 3 runs here onwards for Jahind Karkal to win the match. Backward point, short mid off, deep cover point, deep long off, deep long on, and deep backward square leg. The deep mid wicket. Again, a nice little one. Ball is in the air for a while, but not more than a single. So that single will not going to help. That will say that single will going to make the big difference between run and ball. Now it's a score is a 40 and 11 required from 3 balls. 1-6 will going to change the complexion of the match, but just question raising here is, in this condition,
can they able to deliver that stroke which is much required for Jahin Kakal. Gaurav. Right arm round the wicket. This time he lofted and he got the distance. Just like what we are talking about, one big stroke will go to change the complexion of the match. This is the beauty of cricket. The Gaurav bowls around the wicket and batsman, I think Anirudh, he's got that one right from the middle of the bat and just clearing the boundary line. The fielder there in the deep long on trying his level best. Now last two balls, 5 runs required for the victory. .36 for the loss of 2 wickets. 2 balls, 5 runs required for the victory. And I think it's one of the best match so far in this particular day number 1. We're not having that much of close finish so far in this match. Of course, we are watching the match number 13. But this is a one match, the really very close and very interesting, and match is really inching towards a nail batting finish. 5 runs required for the victory as Gaurav bowling the very important delivery. Yes, sir, he loved it and he got the distance. Yes, he does. He finished the match in a style. Can you believe this? The man, the Shinu Anirudh, he's become the hero here. An unbelievable victory for here Jahin Kakal winning this match dramatically. 2 good strokes which came from the blade of Anirudh. Look at that one, the last one I want to see in the replay. Just moving away from the stumps and transferring his weight onto the back foot, getting all enough power behind the stroke and into the dugouts. What a fantastic finish. He's definitely going to be a hero. And Tank Cobra, all the efforts are gone in a vain because of that. 2 deliveries is bowled there by Gaurav. He bowled round the wicket, but he couldn't manage to beat the bat of the batsman. And Srinivas, little bit correction, Anirudh, who really become the hero here. Why not? He is the one, definitely is a deserve the award of man of the match. He is the one changing the complexion of the match along with his partner Srinivas. What a fantastic unbeaten partnership between these two. Anirudh and Srinivas brought them back into this game. Not only brought them back into this game, but they finished the match in style when it's a very difficult condition. They're hitting 2 sixes. That shows that's the potential of the players of Underarm cricket. It's a really very the word of appreciation which is required by the effort of the batsman. Anirudh finishing the match for his team, has scored a valuable 18 runs in just 12 balls. आयची दिसाच्या लास्ट मॅच वरदा पांडुरंग आणि पडू तिरुपती क्रिकेटर्स मध्ये जावचार आसा. So man of the match, the previous match, undoubtedly, it's one who hits 2 sixes in the final over. It's none other than Anirudh of Jahind 13th मॅचाच्या मॅन ऑफ द मॅच घेवच्या अनिरुद्धान मेन स्टेजार येवका म्हणून जावन निमून घेता आसा. जय हिंद गेम्साच्या अनिरुद्ध. So we are coming to the last and the final match of the day number 1, and before the match will going to start, it's time to ask Gopi to take over the microphone. Final time in the day number 1, and not a final time, I think. It's a second last time. As Gopi will going to take over the microphone. Thank you. टँक कोब्रानी जय हिंद गेम्साच्या मॅचाच्या मॅन ऑफ द मॅच घेवच्या जय हिंदाच्या अनिरुद्धान मेन स्टेजार येवका. जय हिंदाच्या अनिरुद्ध. Dhanyawad Satish. So what a match ended. Absolutely fantastic match. And the match of the tournament ended just short while ago, which won by Jai Hind Karkala
All because of that two consecutive sixes in the last over hit by Anirudh when their team needed 11 runs in 3 deliveries. He hit two consecutive sixes in a style and grabbed the victory for his team because of stupendous batting performance. Absolutely fantastic knock from Anirudh. Now we straight away coming back to the last match, 14th and the last match of the day, and the match starts. First ball outside the off stump from Varadaraj. The ball passed between the batsman's leg and went into the hands of wicket keeper. और जहाँ तक रन का सवाल है, रन इस वक्त नहीं मिलेंगे. तो इस वक्त आरंभिक बल्लेबाज शिव प्रसाद और संदेश मौजूद और वरदराज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद बेहतर गेंद थी. इस वक्त गेंद को इस वक्त उछालना चाहा था क्योंकि विकेट कीपर के हाथों से गेंद चूकी जरूर है, लेकिन दोबारा अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को उन्होंने फील्ड कर लिया और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. पायची दिसाच्या फर्स्ट मॅच आयतारा पायची दिसाच्या फर्स्ट मॅच वी क्रिकेटर्स आणि सप्तमी वॉरियर्स मध्ये जावचे आसा. सकाळ 9 गंटे मॅच स्टार्ट जावका. तशें निमती अर्ध घंटे पुढे म्हळ्यार 8:30 का दोन टीमाचे कॅप्टन्स आनी टिमान हांगा येवन रिपोर्ट करका म्हूण निमून घेता आसा. दैकोरनो आमकां टायमार येवन तुमी सहकार करका म्हूण सांगून तुमकां निमून घेता आसाची. पायची दिसा फर्स्ट मॅच वी क्रिकेटर्स आणि सप्तमी वॉरियर्स दोन टीमाचे के निमून घेता आसा. पाय सकाळी 8 भितर हांगा ग्राउंडार येवन रिपोर्टिंग करका म्हूण सांगून तुमकां निमून घेता आसा. तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं और तीनों गेंदों में अब तक कोई रन नहीं बनाए. बेहतर ओवर साबित होता हुआ वरदराज का. अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. ताइनात ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहता. नॉट क्वाइट मिडल गेंद बल्ले का भीतर किनारा टकराने के बाद जेवण जायनातील कोणे असल्यार जलतीतली वग्गी येवका म्हूण निमून घेता आसा आनी 10 ते 15 मिनिट ते मात्र जेवणा व्यवस्था आसता. 1 घंट्याक जेवणा व्यवस्था क्लोज जाता आनी 15 मिनिट्स आसता. जेवण जायनातील कोणे असल्यार दैकोन जेवण करका. तो रन से यहाँ पर नहीं बने. एक बेहतरीन ओवर साबित होता हुआ वरदराज का और दाहिने हाथों पर तो विकेट गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए धीमी गेंद थी. इस वक्त लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के 7 रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है वरदा पांडुरंगा क्रिकेटर्स के लिए. 1 रन बिना किसी नुकसान के मैच अंतिम मैच इस वक्त पटु तिरुपति क्रिकेटर्स और वरदा पांडुरंगा के बीच खेला जाता हुआ. गेंद को उछाला खूब चोटते के साथ, लेकिन डीप मिड विकेट पर घने पानी वहां पर रुकने की वजह से गेंद वहां पर रुक गई है पानी के बीच. और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था यहां पर 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. जबकि उनकी पारी का पहला ओवर यहां पर प्रगति पर वरदराज गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए. यह गेंद चिप किया. नॉट क्वाइट मिड विकेट. फील्डर वहां पर नहीं है और एक्स्ट्रा कवर से फील्डर दौड़े. थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद जब तक वो गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. इट्स 5 विदाउट लॉस एंड अ फर्स्ट ओवर हैज बीन केम टू एन एंड. जेवण जायनातील कोणे असल्यार जलतीतली वग्गी येवका आनी 10 ते 15 मिनिट मात्र कೌಂಟರ್ ಓಪನ್ ಆಸ್ತಾ. जेवण जायनातील कोणे असल्यार वग्गी येवका. ಊಟ ಆಗದವರು ಯಾರಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಕೌಂಟರ್ ಓಪನ್ ಇರ್ತದೆ. तो एक बेहतर ओवर वरदराज का समाप्त हो चुका है. सिर्फ 5 रन इस ओवर में उन्होंने प्रदान किए और एक बेहतर शुरुआत की गेंदबाजी के जरिए वो पटु तिरुपति क्रिकेटर्स को दे चुके हैं. अब थोड़ी सी बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा जा रहा है विघ्नेश शनाई के हाथों में और वो यहां पर नया ओवर प्रारंभ करते हुए. रात के 11 बजते हुए 10:45 यहां पर बच चुके हैं और जीएसबी प्रीमियर लीग 2022 अंडरआर्म क्रिकेट श्रृंखला का आज का पहले दिन का ये 14वां और अंतिम मैच यहां पर शुरू हो चुका है वरदा पांडुरंगा और पटु तिरुपति क्रिकेटर्स के बीच में. और इस बीच विघ्नेश गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार. संदेश फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए. हालांकि हल्की सी वर्षा अभी भी मैदान पर होते हुए और इस वर्षा तले यहां पर आज का अंतिम मैच आगे बढ़ता हुआ. फील्डिंग में जमावट करने के बाद गेंदबाज विघ्नेश गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए. ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार संदेश सामना करते हुए. यह गेंद इस बार गेंद को स्कूप किया था
गेंद पहुंची लॉक ऑफ के दिशा में, विकेट साधते हुए मिसफील्ड वहां पर, लेकिन एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। काफी धीमी गति से दोनों बल्लेबाज दौड़े थे और आखिरकार एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं। 6 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है बिना किसी नुकसान के और दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को पंच करना चाहता, मिड ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, गेंद पहुंची इस वक्त पॉइंट पर, डीप पॉइंट पर और जब तक गेंद को डीप कवर पॉइंट से फील्डर दौड़ कर आकर फील्ड करे, बल्लेबाज के पास समय था कि वो एक रन के साथ अपना छोड़ बदल सके और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर, जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर। गेंदबाज की गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा विकेट से हटते हुए, लेकिन बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद गेंद आई इस वक्त गेंदबाज के दिशा में और रन से यहां पर बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। विघ्नेश एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट है। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, एक बार फिर से रन नहीं मिलेगा। बेहतर गेंदबाजी, बिल्कुल जमीन के सहारे अलोंग द ग्राउंड उन्होंने गेंद को फेंकी थी, ठीक तरह से जगह नहीं बना पाए, खेला गेंद को बैक टू द बॉलर की दिशा में। डॉट गेंद यहां पर जुड़ता हुआ अगली गेंद के लिए तैयार, फ्लाइटेड गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया इस वक्त मिड विकेट पर, गेंद जाती हुई एक रन मिलेगा जब तक फील्डर डीप मिड विकेट से दौड़कर आकर गेंद को फील्ड करे। मिड विकेट क्षेत्र पर बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। 8 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज पड़ू तिरुपति क्रिकेटर्स के और अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, ये गेंद स्वीप किया और यहां पर कैच छूट चुका है। मुश्किल से मौका जरूर है, लेकिन अंतिम क्षण में अपने दोनों हाथों से कैच को लपकने में असफल और इस बीच ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। गेंद बल्लेबाज के पीठ पर टकराई थी और वहां पर कोई बैकअप नहीं था और फलस्वरूप 2 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति, 10 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 10 विदाउट टॉस और मैं समझता हूं पहले 2 ओवर में बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर दिया है पड़ू तिरुपति क्रिकेटर्स के गेंदबाजों ने। वरदराज और विघ्नेश जो 2 गेंदबाज पहले 2 ओवर में इस्तेमाल किए गए हैं, अपने काबिलियत क्षमता के अनुसार, अपनी एबिलिटी के अनुसार उन्होंने गेंदबाजी की है। सिर्फ 10 रन वो प्रदान कर चुके हैं पहले 2 ओवर में और एक बेहतर शुरुआत गेंदबाजी के जरिए अपने टीम को वो दे चुके हैं। 4 ओवर का खेल बाकी, रनों की रफ्तार में इस वक्त कुछ हद तक बढ़ोतरी लानी होगी। वरदा पांडुरंगा के बल्लेबाजों को और यहां पर काफी बातचीत करने के बाद गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस वक्त सौंपी जा रही है। गेंदबाज श्रीनिवास के हाथों में और वो इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त सामना करते हुए संदेश और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त श्रीनिवास तैयार और M9 स्पोर्ट्स चैनल पर इस श्रृंखला का बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित प्रेस्टीजियस क्रिकेट श्रृंखला जीएसबी प्रीमियर लीग 2022 अंडरआर्म क्रिकेट प्रतियोगिता कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने इस श्रृंखला का शानदार तरीके से प्रस्तुति की है। ब्रॉडकास्ट पार्टनर है यूथ ऑफ जीएसबी वर्ल्ड वाइड। पहली गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 10 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका। तीसरा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद चेक किया इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद हैं और यहां पर यह विकेट नंबर 1 गिर चुका है। संदेश की पारी समाप्त। गेंद को स्कूप किया था जरूर, लेकिन प्लेसमेंट गलत था और लॉन्ग ऑन पर फील्डर खड़े हुए थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है 10 रनों के ऊपर। इट्स 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। देखिए किस तरीके से हुआ था। हैव अ लुक एट दिस इन द मॉनिटर। गेंद को लॉन्ग ऑन पर लपक लिया गया फील्डर द्वारा बेहतर जजमेंट के साथ और पहला विकेट 10 रनों के ऊपर यहां पर गिर चुका है। मणित नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए काफी जिम्मेदारियों के साथ इस वक्त जरूरत है वरदा पांडुरंगा के बल्लेबाजों को एक साझेदारी की और जो कमी इस वक्त नजर आ रही है उस कमी को पूरा करने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद है मणित और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर तैयार और श्रीनिवास गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए
जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, अगर एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो अपनी रनों की रफ्तार में बढ़ोतरी इस वक्त लानी होगी बल्लेबाजों को। वरदा पांडुरंगा के सिर्फ 10 रन अब तक जुड़ चुके हैं 2.1 ओवर में, और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज पटु तिरुपति क्रिकेटर्स के। और अगली गेंद के लिए गेंदबाज इस वक्त तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी बैट्समैन इज नाउ गोइंग टू फेस मनित। फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए मनित के लिए, और गेंदबाज श्रीनिवास इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथ राउंड द विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बार स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड, गेंद को उछाला गेंदबाज के सिर के ऊपर से, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और जहां तक सवाल है मनित का, तो शायद अपना बल्ला बैट बदलने के लिए वो पेविलियन की ओर बढ़े, और अपना बैट बदलने के बाद एक बार फिर से अपने स्वस्थान पर लौटते हुए। और गेंदबाज श्रीनिवास अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। शिव प्रसाद इस वक्त सामना करते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्कूप किया, फील्डर काफी पीछे, कवर पॉइंट पर 1 रन मिलेगा। एक टिप्पे के बाद, एक या 2 टिप्पे के बाद शायद उन्होंने गेंद को वहां पर फील्ड किया, और इस बीच बल्लेबाज के पास समय अवकाश था कि 1 रन के साथ वो अपना छोड़ यहां पर बदल सके। रन इस वक्त चाहिए। वरदा पांडुरंगा के बल्लेबाजों को वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। और अगली गेंद लेकर इस वक्त श्रीनिवास तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद को मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं कर पाए। विकेट कीपर का थ्रो बैकअप होता हुआ इस वक्त स्लिप मिड ऑन पर 1 रन का इजाफा। लेग बाय का इशारा, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। सिर्फ 3 रन इस ओवर में अब तक प्रदान कर चुके हैं श्रीनिवास। एक बेहतरीन ओवर उनका अब तक साबित हो चुका है। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, केम अलोंग द ग्राउंड एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन। सो फैंटास्टिक ओवर, वन मोर फैंटास्टिक ओवर केम टू एन एंड in Padu Tirupati cricketers' point of view. Just 3 runs came from this over. 3 overs completed, and after 3 overs, still the batsmen of Varada Panduraga searching for the right track. They managed to score 13 runs, only 13 runs on the board for losing 1 wicket, and still in overall calculation. Still 3 overs left in their innings, and let's see how many runs they are making in this remaining 3 overs. और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंग्रेजी में आज दूसरे अंतिम बार फॉर द सेकंड लास्ट टाइम मेरे काबिल दोस्त सतीश को। आइए सतीश, धन्यवाद। थैंक यू। So Varadaraj will going to continue the 4th over of the innings, and this time outside edge of the bat, and the batsman able to pick the single here. So with that single, scoreboard now moves on to 14 on the board for the loss of 1 wicket. Varada Panduranga, after winning the toss, elected to bat first against Padu Tirupati, and Varada Raj is a bowler who got a first hat-trick of this tournament. Only 1 hat-trick actually in this tournament. Again, nicely bowled, the ball hitting his legs. Shiva, they wanted a run, but his partner is not interested, and rightly so. So there is no question of any run. So struggle time continues here. His runs very hard to combine against discipline line and length of Varadraj. This time he wanted a big shot, but not really getting hold of that one properly. The Shiva's innings is comes to an end as you're looking for the expansive drive over the deep long off region, but not really getting the timing behind the stroke. Quite understandable as Varad bowled excellent line and length, and he tried to hoist it over, but not getting enough bat onto that. Mid-off fielder making no mistake at all. Silly mid-off fielder takes a catch after completion. Takes a catch now. It's a 14 for the loss of 2 wicket, and Shiva finished this innings for just 8 runs, and valuable 8 runs in just 12 balls. The new batsman in is Pratap. Is walking towards the middle with a lot of responsibility. The opening batsmen are back into pavilion. Sandesh as well as Shiva, Prasad. Pratap is a new batsman.
Varadraj. The first over he bowled very well, just 5 runs he conceded. The second over now so far is so good. This time outside run off time too far, so that wide call by umpire. One more addition to total with the addition of that single scoreboard numbers on to 15 for the loss of 2 wickets. Is over number 4 in progress. Varadraj back to his bowling mark. Alright, I'm over the wicket. Delivers. Excellent delivery across the line of the delivery. The batsman just closing the face of his bat. Picked up a single down to square leg region 16 for the loss of 2 wicket. Over number 4 in progress. Now, Varadraj bowling to the right-hand batsman Manit, the left-hand batsman Manit, going for the big shot. This time Varadraj, what a fantastic bowler he's been, and what a great tournament he's having here. They picked up a wicket here, brilliant, absolutely fantastic one. So wicket number 2 in this particular over for Varadraj, and the wicket number 3 is back into pavilion of Varada Panduranga, looking in a deep trouble now. 16 for the loss of 3 wickets. It's a jersey number 13 what Varadraj is wearing here, but it is not a many players are wearing that number 13. Everybody thought that it might be the unlucky number, but for Varadraj it's definitely going to be a very lucky number, and he's hunting as a wicket is concerned. He is a really big hunter of the wickets in this particular tournament. So many times in his career he becomes the best bowler only because of his consistency of line and length. Look at that one more fantastic delivery. So over number 2 completed. What a great over here from Varadraj. So after completion of over number 4, it's a 16 for the loss of a 3 wicket. The struggle time continues here of Varada Panduranga are deep in trouble, and the run rate is exactly 4 runs per hour. Now 2 overs remaining in the innings of Varada Panduranga, and so far looks like the Padu Tirupati cricketers are looking in a commanding position. Tomorrow will be the final day of this cricket tournament of this prestigious GSP Premier League 2022. Not an easy job to organize this cricket tournament in this rainy season when monsoon will going to enter, and really it is a very great job by the organizers to organizing the cricket tournament because of the supporters, the support of all the team players, and the support for the well-wishers. The sponsors definitely will going to be behind the success of this cricket tournament. So first run of the over number 5th, 17 for the loss of 3 wicket. Raghavendra, he finishes 2 overs. So in his place, Raghavendra, 5th over, right arm over the wicket. This time I lofted at one. The chance here for the fielder, total misjudgment. Looks like it's the catch for Varadraj, but Varadraj thought that it might be the catch for the deeper, longer fielder, extra cover fielder. And because of that misjudgment, the ball is landed safely between the 2 fielders. So, couple of runs here for the batsman. Just a single implication, single there. 18 for the loss of 3 wicket. Sensible batting. And that was really required in the beginning for the batsmen of Varada Panduranga. So 18 for the loss of 3 wickets. Runs are very hard to combine. They're dealing with slog overs.
So far, it's a very good over there from Raghavendra. Using his feet. Oh, what a shot! This is the stroke of the tournament. That ball is landed into the commentator's rope for the youth six. Player is asking for the used ball. Suddenly, that ball went outside the stadium. What a fantastic shot! Look at that one in replay. Just using his feet, and look at the flow of the bat. Tremendous strike, and excellent camera work by the cameraman as well. Just chasing the ball where the ball is went, and straight into the commentator's roof. And after hitting the commentator's roof's ball is just went outside the stadium. And umpire asking for the used ball. Score jumped into 24 for the loss of 3 wicket. The much required big stroke which just came from the bat of Kiran Kamath. 25 on the board. 25 for the loss of 3 wicket. $25 for the loss of 3 wicket as bowler Raghavendra. Kiran Kamath will going for the big shots after getting the 6, and I wait and see what he will going to get here. Again, he tried to repeat that one, but Raghavendra doesn't looks like he will going to give the opportunity for the batsman for the one more big shot. This time he bowled slight short pitch delivery, slower one as well, and the wicketkeeper behind the stump completes the job. The one more wicket is back into pavilion. 25 for the loss of 4 wicket, and over number 5 completed. Last over remaining. The run rate now a little bit okay, 5 runs per over. The last over which is remaining. What a mighty stroke that one from the batsman Kiran Kamath. The stroke which just came from his bat in the previous over, when he's just using a feet, couple of steps coming down the wicket. It's always going to be the good to see that whenever the batsman using the feet, they will going to get enough power behind the stroke. Transferring all the weights onto the front foot and dispatching that one very straight, as straight as an arrow. That ball is landed. The last over going to start from the commentary box end. Ashlesh, the final over. Pratap is a striker. Now they're going for the single. There is the attempt for the run out, and oh my goodness, the wicket. That's going to be a wide. 1+1, 2 more to the total with the couple of runs scored. Numbers on to 27 for the loss of 4 wicket. Pratap running very hard towards a non-striker's end. You know exactly the wide ball. They need to capitalize that wide ball into 1+1. So 27 for the loss of 4 wicket. Maybe the Pratap is asking from the dugout to give the towel what he wanted because of that wetness. Couldn't manage to grip the bat properly. Ashlesh bowling right arm round the wicket. Far outside now, off stamp. It's a big wide. Runs are coming now very freely for the Varda Panduranga. Are looking in now good position. After that slow start, they got some runs, wide +1. So 1 shot which is called by umpire. They run 2, but they called 1 shot, so that 2 runs added to total. With that, a couple of runs scored. Numbers on to 29 on the board. 29 for the loss of 4 wicket.
Ashlesh having some tips with the players of other players, because so far they've done a great job, the bowlers of Padutirupati, to restrict the runs of the opposition. But in the last couple of deliveries, and they're really back Varda Panduranga with some extra run with some big stroke. Again, wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball, because that ball deflected from the bat of the batsman. One more to the total with the addition of that single score, but moves on to 30 now for the loss of 4 wickets. So over number last is in progress. Ashlesh. Second time in this over. Still there's 5 balls remaining in their innings. This time Pratham going for the cut shot. Not really able to get the placement right. And one more addition to total 31 for the loss of 4 wicket. Now it looks like it's now score looks to be a little bit satisfied one. The one stage they're very difficult to cross over the 30. Now they cross over the 30. Now 31 for the loss of 4 wicket. A lovely shot, slashed that one very hard. And he got the placement right, and before the fielder from deep point region. Look at that fielder. It's very hard to grip, and he has a chance of run out, and umpire raising his finger as he's gone. Little bit short of his crease, rightly so. Umpire Harish Padil, you know exactly the batsman couldn't manage to land the bat in the right time when the throw which came from the fielder. Look at the fielder, how difficult it's going to be for the outfielder to grip there. It's definitely going to be a spongy and very greasy, very difficult for the fielder to grip over in this condition, but he's managed to hold his the balance very well, body balance, and he just returns the ball very quickly in the hands of wicketkeeper. A little correction for in the hands of the bowler. Score numbers on to 32 for the loss of 5 wicket. Guru is a new batsman. He's in non-strike again. Now left-hand batsman is on strike. Dhanush. This time again slashes, but straight to the hands of fielder. He's not really moved one step. Where he was standing, ball went straight to his hand. And the wicket number 6 is pitches back into pavilion of Varda Panduranga, 32 for the loss of 6 wicket. New batsman in is Vishwas. As for the rules and regulation of the present cricket is concerned, there is no changeover. While the catch has been taken in the deep, the new batsman have to take the strike. That means the new batsman now having a strike, picked up a single, rotate the strike. Scoreboard moves on to 33 for the loss of a 6 wicket. Last one delivery remaining of the innings of Varda Panduranga. They got 33. It's not an easy 33. It's a very hard combined 33 runs. The one big stroke which just came from the bat of Kiran Kamath. That is a huge 6. Last delivery. Total misjudgment. Absolutely total misjudgment by the Guru. And dot a delivery to finish the over. So that's it. End of 6 overs. After completion of over number 6, Varda Panduranga, after winning the toss, elected to bat first. They managed to score 33 runs, and they set a target of 34 to win the match. The final match of the day number 1. And the final time I would like to ask Gopi to take over the microphone before the innings will going to start of Padutirupati. Maybe it's the total which is not a big one, but in this condition it's definitely going to be a big total if the bowlers of Varda Panduranga are able to bowl a good line and length. They can win the match. At the same time, the sensible batting which is required from the batsmen of Padutirupati. They got a formidable batting department, Padutirupati, no doubt at all. They got us a very good tournament so far, and wait and see can they able to continue that winning track in this final match of the day number 2. And it's time for Gopi to take over the microphone. Final time in this day number 1.
धन्यवाद सतीश. So the last session of the day number 1 of GSB Premier League 2022 is now going to begin. And 34 the target for Padu Tirupati, set by Varada Panduranga. Had batted first, they managed to score 33 runs in the stipulated 6 overs. They started slowly, but at the last in 1 or 2 overs they came back very well, getting a couple of runs and getting some runs, and because of that they finished respectively with 33 in the stipulated 6 overs, and now the target for Padu Tirupati is 34. The required run rate now for them is exactly 5.66 runs per over. They have to score 34. They have to score in the stipulated 6 overs. That means in stipulated 30-60 levels with the help of 10 wickets. The present equation shows for them, and their innings now going to start. Their openers at the crease. दोनों आरंभिक बल्लेबाज यहाँ पर मौजूद. Batsman. Striker. रामनाथ और विघ्नेश शनई आरंभिक बल्लेबाज, जबकि विश्वा इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए मैच की पहली गेंद लेकर उनके पारी की पहली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता. बल्ले का फीतरी किनारा टकराने के बाद, पैरों पर टकराने के बाद गेंद पहुंची शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. और इसी बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 1 रन बिना किसी नुकसान कर. जहां तक पडू तिरुपति का लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, एक सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप उनके पास है, जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया. यहां पर अगर वो अपने काबिलियत के अनुसार, क्षमता के अनुसार, एबिलिटी के अनुसार बल्लेबाजी करते हैं तो निस्संदेह इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं. जहां तक सवाल है गेंदबाजी का वरदा पांडुरंगा का, तो उन्हें राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर एक बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर करनी होगी अगर पडू तिरुपति के बल्लेबाजों पर उन्हें अंकुश लगाना है. तो देखते हैं क्या होता है. दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर गेंद जाते हुए, और जब तक डीप मिड विकेट पर फील्डर थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद बेहतरीन फील्डिंग के जरिए गेंद को थ्रो करे. बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर. M9 स्पोर्ट्स पर लाइव टेलीकास्ट ये श्रृंखला इस वक्त किया जा रहा है यूट्यूब के जरिए, और आज का 14वां और अंतिम मैच इस जीएसबी प्रीमियर लीग 2022 अंडरआर्म क्रिकेट प्रतिष्ठित श्रृंखला के अनुसार यहां पर खेला जाता हुआ. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. यह गेंद ड्राइव किया स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन के दिशा में, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास समय था कि 1 रन के साथ वो अपना छोड़ बदल सके, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 3 रनों पर. रात के 11:15 यहां पर बच चुके हैं, और आज का अंतिम मैच का अंतिम सत्र यहां पर खेला जाता हुआ. और गेंदबाज ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहता, थोड़े से सफल होते हुए, चूंकि परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद थी, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. स्कोर रुक चुका है 13 रन बिना किसी नुकसान के. गेंदबाज विश्वा गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, अब तक उनका एक बेहतर ओवर साबित हो चुका है, और इस बीच फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर करते हुए. वर्षा लगभग मैदान पर इस वक्त रुक चुकी है. लगभग लगातार 4 घंटों तक वर्षा होने के बाद अब वर्षा जो कि इस मैदान पर रुक चुकी है, और इस माहौल में आज का इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत आज का अंतिम मैच यहां पर खेला जाता हुआ. दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरत स्ट्रोक वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर मैं समझता हूं वहां पर मौजूद है. एकमात्र रन और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े. दूसरा रन यशस्वीतम यहां पर पूर्ण कर चुके हैं. फील्डर को थोड़ा सा मेहनत वहां पर करना पड़ा था वाइड लॉन्ग ऑफ पर. इस बीच बल्लेबाज के पास समय था कि 2 रन के साथ वो अपने छोड़ पर वापस आ सके. 5 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के. पहला ओवर यहां पर प्रगति पर. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो विश्वा इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. विघ्नेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट. विश्वा की अगली गेंद क्रीज के कोने से, इस बार गेंद टकराई ऑफ स्टंप पर, और इसी के साथ ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका है. विघ्नेश गेंद को उछालना चाहते थे, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए और आखिरकार बल्ले को चीरती हुई सीधे ऑफ स्टंप पर जा टकराए, और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है विघ्नेश के रूप में, और पडू तिरुपति क्रिकेटर्स अपना पहला विकेट खो चुका है 5 रनों के योग पर. इट्स 5 for 1 इन द फर्स्ट ओवर. इट्स 5 for 1 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ओवर. इन फैक्ट
तो 5 ओवर का खेल अभी भी बाकी, 29 रन चाहिए. 30 balls now remaining in overall calculation in their innings. 29 more runs now they have to score for victory with the required run rate of exactly 5.80 runs per over at this situation. Still they have got 9 wickets kept intact. 9 विकेट इस वक्त उनके लिए सुरक्षित और नए बल्लेबाज के रूप में एक और विघ्नेश नंबर 2 इस वक्त पडू तिरुपति की ओर से क्रीज पर मौजूद नए बल्लेबाज के तौर पर. और इस वक्त गेंदबाज किरण गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए. बेहतर ओवर, पहला ओवर समाप्त हो चुका है विश्वा का, जिसमें सिर्फ 5 रन उन्होंने प्रदान किया और ओवर की अंतिम गेंद पर विघ्नेश का विकेट उन्होंने प्राप्त किया. और इस बार एक और विकेट यहां पर गिर चुका है बोल्ड आउट के रूप में. इस बार किरण की बारी और गेंद को उछालना चाहा था बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद उनके बल्ले और पैर को चीरती हुई सीधे निकली मिडल ऑफ स्टंप पर. और इसी के साथ दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है. देखिए किस तरीके से हुआ था. हैव अ लुक एट दिस वन इन द टीवी मॉनिटर. और जहां तक सवाल है विकेट का, तो दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है और रमानाथ आउट होने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए 2 रन उन्होंने बनाया, 3 गेंदों का सामना किया और आखिरकार दूसरा विकेट यहां पर खो चुका है पडू तिरुपति क्रिकेटर्स. इट्स 5 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट. So after the departure of Ramanath, the number 4 batsman is now coming out to the middle for Padu Tirupati cricketers. Chetan N नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर पधारते हुए और वो इस वक्त सामना करेंगे किरण की ओवर की अगली गेंद का. तो एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए गेंदबाज वरदा पांडुरंगा के, और अब तक उन्होंने बेहतर गेंदबाजी की है उनके पारी के पहले 7 गेंदों में दोनों गेंदबाजों ने. और देखना यह है कि आने वाले गेंदों में भी वो अपना इस सफलता के सिलसिले को बरकरार रख पाते हैं या नहीं. और फील्डिंग में जमावट इस वक्त किरण करते हुए नए बल्लेबाज चेतन सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट किरण इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद इस बार गेंद को स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में. वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर. 6 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. और रात के 11:30 यहां पर बचते हुए और आज का अंतिम मैच की अंतिम पारी यहां पर खेली जाती हुई. ये गेंद इस बीच अच्छी गेंद थी, कुछ ज्यादा हद तक कलेक्शन से बाहर की ओर नहीं निकलती. रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश करने के बाद रन लेना चाहता, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं और गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर पानी पर जाकर रुक चुकी है और शॉर्ट फाइन लेग फील्डर गेंद को लौटा चुके हैं गेंदबाज के हाथों में फील्ड करने के बाद. स्कोर रुक चुका है 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर. दूसरा ओवर प्रगति पर. किरण गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए तो जहां तक सवाल है 28 और रन चाहिए विजय के लिए, जबकि गेंदें बाकी हैं उनके पारी में 28. सो 28 टू गेट नाउ फ्रॉम 28 डिलीवरीज. और किरण गेंदबाजी इस वक्त अनिल किणी कहीं असल्यारंग मेन स्टेज आले हो का एक्टिव रबर स्टैंप अनिल किणी मेन स्टेज आले हो का हेलमेट ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ನು ಹಂಗೆ ವೇತ मेन स्टेज आलागी. इस बार ऑन साइड पर कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ा, मौका जरूर था रन आउट का लेकिन गंवाते हुए फील्डर 1 रन का इजाफा. 7 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर. दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर. किरण एक बेहतर लेग के साथ किणे लास्ट वार्निंग तो क्या है, हेलमेट डालने आ रहा. तो यहां पर 7 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर. और दूसरा ओवर यहां पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए किरण लेफ्टी बैट्समैन इज नॉट गोइंग टू फेस विघ्नेश. और किरण फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर था विकेट विघ्नेश के लिए. इस बार
एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट डिलीवरी, और गेंद की तेजी को इस वक्त समझ नहीं पाए, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी और सबसे कुछ दूरी पर गेंद निकलती हुई और इस गेंद पर बाल बाल बचते हुए बल्लेबाज। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, और इस गेंद पर पूरी तरह चकमा खा गए बल्लेबाज और बीट हो गए। एक रन मिला जरूर बाई के रूप में, और स्कोर बढ़कर इस एक रन के साथ अब पहुंच चुका है 8 रनों पर। 2 विकेट के नुकसान पर एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए किरण इस बार ऑफ स्टंप पर आते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, चूंकि डॉट गेंद, हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ पडु तिरुपति क्रिकेटर्स के ऊपर, और इस वक्त हर गेंद पर रन्स बनाना उनके लिए जरूरी बन चुका है। फुल टॉस गेंद को उछालना चाहा लेकिन नाकामयाब, एक बार फिर से, और इसी के साथ ओवर नंबर 2 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। सो टाइडी सेकंड ओवर केम टू एन एंड, फर्स्ट ओवर फ्रॉम किरण एंड टाइडी 2 overs bowled by the opening bowlers of Varada Panduranga, Vishwa and Kiran, and 2 overs completed, and after 2 overs still the batsmen of Padu Tirupati cricketers searching for the right track. They managed to score only 8 runs on the board for losing both openers, 2 wickets down for them, and 26 more runs now they have to score for victory in remaining 24 deliveries, and the asking run rate is now gone up to exactly 6.5 runs per over. 6.50 रन प्रति ओवर के औसत से अब रन्स बनाने 26 बचे हुए 24 के दो पर, और तीसरा ओवर उनकी पारी में यहां पर शुरू होता हुआ नंबर 12 जर्सी पहने हुए गेंदबाज नया ओवर प्रारंभ करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से धनुष गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज विघ्नेश। 26 रनों की और दरकार, 24 गेंदें बाकी। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए विकेट कीपर, और धनुष ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। विघ्नेश इस वक्त सामना करते हुए, रनों की सख्त दरकार इस वक्त पडु तिरुपति क्रिकेटर्स के बल्लेबाजों के लिए, जबकि डॉट गेंद और विकेटों की सख्त जरूरत इस वक्त वरदा पांडुरंगा के गेंदबाजों के लिए। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा गेंद और बल्ले के बीच में कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है, और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार इस बार। ओह, दैट इज एन एब्सोल्युटली गुड वन दिस टाइम, मच स्ट्रेट लाइन, गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए, बीट हो गए गेंद। विकेट कीपर ने अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड कर लिया, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 8 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। जिस तरह पारी की शुरुआत में वरदा पांडुरंगा के बल्लेबाजों ने स्ट्रगल किया था, उसी तरीके की स्ट्रगलिंग इस वक्त करते हुए बल्लेबाज पडु तिरुपति के, तो पिच गीली होने की वजह से गेंद बल्ले पर आसानी के साथ इस वक्त नहीं आ रही है, गेंद रुक कर आ रही है, और बल्लेबाजों को खुलकर स्ट्रोक्स खेलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और 2 लगातार डॉट गेंदे यहां पर धनुष इस वक्त फेंक चुके हैं। अपनी अगली गेंद इस वक्त लेकर तैयार तो खेल जो कि वहां पर कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है, और स्कोर भी रुक चुका है इस वक्त। 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर 22 गेंदें बाकी हैं, 26 रन और चाहिए 26 टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 22 डिलीवरीज। गेंदबाज धनुष गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए विघ्नेश के लिए, दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार एक बार फिर से विकेट कीपर के हाथों में गेंद, और 3 लगातार डॉट गेंदें यहां पर धनुष फेंक चुके हैं, एंड दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ फाइन ओवर सो फार। वन मोर फाइन ओवर इन वरदा पांडुरंगा's point of view. No runs scored in the first 3 deliveries, 3 consecutive dot balls bowled by धनुष, और काफी आत्मविश्वास के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और एक बार फिर से तैयार दाहिना तो द विकेट। ये गेंद ऑन साइड पर शफल होते हुए गेंद को उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, शॉर्ट थर्ड पर गेंद पहुंची। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है लेग बाय के रूप में, अंपायर का इशारा यहां पर होता हुआ, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। रनों के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर करते हुए पडु तिरुपति क्रिकेटर्स के बल्लेबाज, और कुल मिलाकर अब उनकी पारी में 20 गेंदें और बाकी हैं, रन से चाहिए 25। 25 to get now from 20 deliveries. Tidy bowling performance still continuing here from the bowlers of वरदा पांडुरंगा, और धनुष गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए
चेतन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, फुल टॉस, आगे निकले थे, स्ट्रोक खेलने में चूके, विकेट कीपर के हाथों से गेंद चूकी, लेकिन अपने दूसरे प्रयत्न में यहां पर गेंद को फील्ड करते हुए विकेट कीपर एक और डॉट गेंद, स्कोर इस वक्त रुक चुका है 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 9 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। तो सिर्फ एक रन, वो भी लेग बाय के रूप में इस ओवर में प्रदान कर चुके हैं अब तक धनुष, यानी बल्ले बैट से कोई रन वो उन्होंने प्रदान नहीं किया। तो निस्संदेह बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला इस ओवर में वो जारी रखते हुए इस ओवर में अंतिम बार तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद चूके और गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट मैन पर, फील्डर वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए अंपायर के इशारे का इंतजार है, शायद गेंद और बल्ले का डिफ्लेक्शन हुआ था मेरे हिसाब से, नहीं बाई का इशारा। तो इसी के साथ मेडन ओवर की समाप्ति यहां पर कर चुके हैं धनुष। Absolutely fantastic over came to an end. 10 for the loss of 2 wicket. Maiden over bowled by Dhanush. और 3 ओवर के बाद अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज पड़ू तिरुपति क्रिकेटर्स के बल्लेबाज अपने सही राह को तराशते हुए स्टिल सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक, 24 टू गेट इन रिमेनिंग 18 बॉल्स, और देखते हैं क्या होता है। रिक्वायर्ड रन रेट अब जा पहुंचा है 8 रन प्रति ओवर, रिक्वायर्ड रन रेट इज नाउ गॉन अप टू एग्जैक्टली 8 रन पर ओवर, और 24 रन चाहिए 18 गेंदों पर, 24 टू गेट फ्रॉम 18 डिलीवरीज। और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए आज अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम टुनाइट मैं इस वक्त आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi. So 10 for the loss of 2 wicket, and really it's a fantastic bowling performance by the bowlers of Urva Panduranga. Even though they're depending not as big total, they're depending a small total, but sometimes it's happening in the condition very very suitable for the bowlers. Even the small total looks like it's going to be a big total. Even the formidable batting department of Padu Tirupati cricketers looks like the first time. Looks like they're shackling here against the bowling of Padu Tirupati. This time again a nice looking ball. Again the chance of run out in a long striker's hand, but bowler saying that no, I'm not attempting for the run, but I want to ball some dotted deliveries, put some pressure onto the batsman, because asking run rate is now gone up to 8 runs per over. The first maiden of this tournament, which is bowled by Dhanush, I think so, in this particular tournament, and Dhanush is the bowler. The maiden over, that was the 2 byes in that over, that will not go into the account of the bowler, because that will go into the account of extras. This time, what a shot! That was a reverse throw, comes into play, and the fielder takes a wonderful running catch. What can you believe this? Once it looks like the ball is left the bat of the batsman by playing the switch it definitely looks like it's going to be at least the boundary. But the fielder is there in the deep extra coverage, and what a fantastic running catch. Look at that one in the replay, hoisting it over with the switch hit, and look at the effort there from the fielder. Once it looks the ball just slipping out of his hand, but he's just holding his balance and keeping the eye on the ball for the last moment, and he completes a fantastic catch, and one more wicket is back into pavilion of Padu Tirupati cricketers are looking a little bit under pressure now. 10 for the loss of 3 wicket. Now new batsman in is Srinivas Pai. Is walking towards the middle. He's got a potential, he's got ability of changing the complexion of the match. So far it's a really good going for the bowling side. And especially the 3 bowlers actually is introduced. The first, which is bowled by the bowler Vishwas, bowled brilliantly, is scored 5 runs, is given 5 runs. Then after that Kiran bowled excellent over, just 3 runs. But the previous over, this is a maiden over which is bowled by Dhanush, and now it's a Pratap is just breaking the partnership in a right time. 10 for the loss of 3 wickets. Still it's long way to go. 24 more runs required for the victory in remaining 16 deliveries. 16 deliveries, 24 runs required for the victory. One big shot can change the complexion of the match, just like what was the previous match when Jai Hind cricketers Karkal, they're looking some runs. One big hit which really changed the complexion of the match. This time, what we're talking about? What we're talking about? Here you go, the big stroke. This is the beauty of cricket. You cannot
say anything about the cricket. It was an unpredictable game. The cricket is absolutely unpredictable game. Look at the stroke. Oh, what a fantastic stroke. That was a huge six, a mighty stroke coming from the bat of the mighty striker of the ball, Srinivas. When he was arrived to the middle of the pitch, I just mentioned, he's the one, he got ability of changing the complexion of the match with a big stroke. And that six brought right back into this game the team Padu Tirupati cricketers. 16 for the loss of 3 wickets. Again, they swept that one. That was a sensible batting there from Srinivas. Immediately after getting a 6, he's not really requiring for the one more big shot. You know exactly, they're back into this game with the 6. Then they try to rotate the strike. Good thinking. 17 for the loss of 3 wickets. That means half of the job is completed. Now yet to complete another half of the job. That means 17 runs scored. Another 17 runs required for the victory. And this is over number 4 in progress. Now coming back to the equation. 14 balls remaining. 17 runs required for the victory. That gap between run and ball is coming very, very close to bat and run and ball. That just a three difference between run and ball. It is definitely going to be manageable if both the batsmen bat sensibly. Here is Pratap. Now he's changing his angle. He's coming round the wicket to the left-hand batsman. Vignesh facing the next delivery. Went for the reverse sweep. Got the placement quite rightly. They're looking for the second. They're coming back for the second. Did bit fumble from the field. And they got a couple of runs here. Now looks like slowly and steadily the batsmen started to get the runs, and Padu Tirupati cricketers are strongly back into this game. And scoreboard now moves on to 19 lead correction. 19 for the loss of a 3 wicket. 19 for the loss of 3 wicket. 15 to get. 15 to get from 13 balls. This time you're looking for the improvising again. A very good placement there for Vignesh. They're looking for the second. Good collection and throw is not a good. Throw is not a good. They're trying for the shying at the stumps. One more opportunity for the run out, but Srini was too far across the passing in the non-striker's end, so that no question of the third run. But what a fantastic comeback here by the batsman, especially the Srini was changing the complexion of the game, and Vignesh even the better support is coming from him as well. So after completion of over number 4, this is turning out to be the comeback over here for Padu Tirupati, and 23 for the loss of 3 wicket. Now last 2 overs remaining. (21) on the board. 13 more runs required for the victory in 12 balls. (21) for the loss of 3 wicket. Now last 2 overs remaining. 12 balls remaining. 13 more runs required for the victory. Vishwa. The bowling is second over. He bowled very well the first over. The same performance which is required in this over. The very important year for both the teams. And Varada Panturanga, they wanted to back into this game. This over is going to be very important for Vishwa to bowl some economical. But Srinivas having him in the middle, I don't think there is not that much of relaxation for the opposition team. Look at the strike. Look at the strike here from Srinivas. Hitting the ball quite nicely. He's not really looks like he's playing under the difficult condition. But he's just enjoying his the big hittings quite nicely. And he got a single now. 22 for the loss of 3 wicket. Now 12 more runs required for the victory from 11 balls. Vishwas changing the angle. Little bit confusion is going on here. Everybody shouting there. That shows the pressure for the fielding team as a Vignesh. This time going for the sweep shot. The ball is in there for a while, but very interesting to see the decision of umpire. It's deflected from the legs. No question of catch there. But excitement in the field there. Maybe they're thinking about that might be the catch, but ball is no contact with the bat, but certainly is a contact with the leg of the batsman. So leg by call by umpire. 23 for the loss of 3 wicket. Another 11 more runs required for the victory from 10 balls.
Srinivas back on strike. For him, one at backward point, one at short extra cover, one at deep cover point, deep long on deep in wicket and deep backward square leg. Reception was nice on upishly, but safely on bounce. 2 bounce collected by the deep extra cover fielder. Before that, Srinivas completed a couple of runs. Now, the equation looks to be pretty easy. Each and every ball now requires some runs. 25 for the loss of 3 wicket. 25 for the loss of 3 wicket. That means now 9 more runs required for the victory in remaining 9 deliveries. Each and every ball required run for Padu Tirupati here onwards. But each and every dotted delivery is much required for the fielding team for Varada Panduranga. And they're taking a lot of time here. The time is exactly 11 past 35. It's a midnight. But interest of the players not really lost in this day number 1. Here is the next one. Vishwas. Right arm over the wicket delivers. Beautifully bowled. Just like I'm mentioning about now. Each and every dot is so important here for the fielding team. Varada Panduranga desperately requires some dotted deliveries, wicket taking deliveries. Now 9 required from 8 balls. Vishwas. He bowled very well the first over. Picked up 2 valuable wickets. In that over, 1 valuable wicket in fact. That was a big wicket actually. The wicket of Vignesh. Here is Vishwas, right arm over the wicket. This time, lovely shot, straight on the ground, straight as an arrow. And fielder from the deep long offense has run across the line towards his left hand. Fields a very good fielding out there by the fielder. But a couple of runs he cannot stop here. The couple of runs here for Srinivas and for his team. And with that couple of runs, scoreboard now moves on to 27 for the loss of 3 wickets. Now 7 more runs required for the victory in 7 balls. Just look at it in screen. Just look at it in screen. There's a 7 required from 7 balls. Will it going to be the fielding team? Will it going to be a chasing team? For that you have to wait for another 7 deliveries. And I think the Vishwas in the sense is a confidence. And the confidence is so important here for Vishwas. If he wanted to get the wicket, if he wanted to get some dotted deliveries, this is the final delivery of the over. And in this final delivery, at least he wanted to bowl 1 dotted delivery. But Srinivas, he's looking very confident. What an innings he's playing is a match-turning innings. He's batting on 12. He's batting on 12. Now 7 required for the victory. Here is Vishwas. Seaming in. Went for the reverse sweep, appeal for leg before wicket. This is just a chance of run out, directed, and he's gone. He's gone. It's the right decision there from umpire Pushparaj. Absolutely right, because a little bit of absence of mind here from the batsman Srinivas, costing a big wicket here. He's not really going reach his fence. He just looks back to his partner. That time it's a very good throw coming from the fielder at short fine leg region. Just look at that one in replay. Maybe a little bit of absence of mind. Just look at that one. It went for the reverse stroke. There's a backstop fielder throwing the ball towards the non-striker's end. And look at the bat of Srinivas. He is not really landing. He lost. He's not really landing his bat. But the direct hit comes into play. And Pushparaj is in the right position. This is so important for the umpires whenever the run out taken place. The position is very key and is the right position to judge that run out. And the wicket number the 4 which is back into play is a big wicket. What we're talking about. And now last over remaining. 7 runs required here for Padu Tirupati. Match is not yet over. So 7 runs required for the victory. 7 runs required for the victory in the last over. Guru is really now bowling the very important over for his team. The victory for Varada Panduranga is all up to the bowlers, and at the same time the victory for Padu Tirupati is left on these 2 batsmen. Harish just came into middle, but Vignesh so far is playing patience innings. Not a big score came from his bat, but this position I think might be the very handy.
So 7 runs required for the victory. And now 7 required from last over. The Vignesh's left-hand batsman is on strike. Little bit correction. Hari Prasad is on strike. Vignesh is on non-strikers end. And two left-hand batsmen are in the middle. And Guru is one of the experienced campaigner for the side of Varada Panduranga. And wait and see, can he able to make the magic here? Lot of discussion is going on about the field set. Someone is asking that why there is a deep backward square leg, and someone asking why it needed some deep backward square leg. But altogether it looks like one at deep backward square leg, one at deep mid wicket and deep long on the three fielders in the onside region. One at short cow point, which is unorthodox. One at deep long of the two fielders outside the circle in the offside region. This time going for the safe shot, appeal for leg before wicket. That was a half-hearted shout there from the bowler. So leg by call by umpire. The going down the leg stump. One more addition to totals with the addition of that single scoreboard. Now moves on to 28. 6 required. ಅನಿಲ್ ಕಿಣಿ ಅಂತ ದೈಕೋರ್ನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಾಡ್ಕ ಅನಿಲ್ ಕಿಣಿ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅನಿಲ್ ಕಿಣಿ ಅಂತ ದೈಕೋರ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಲಸಿಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಾಡ್ಕ te ವೈರಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಸ ಉದ್ದ ಪೋಣ. This time lovely reverse stroke comes into play. The Vignesh rotating the strike, not missing the delivery here now. 29 for the loss of 4 wicket, 5 runs required. Five required. Again using his feet, the wicketkeeper behind the stump completes the job. This is a fantastic over turning out to be here by Guru. Really getting a wicket here as Hari Prasad using his feet coming down the track against the bowling of Guru. And just look at that one and replay. The wicket that the batsman just wanted to charge that one. Missed the line completely from his bat. Then wicketkeeper behind the stump did the rest. And one more wicket is back into pavilion. Now equation. 5 required and 3 balls remaining. 3 balls, 5 runs required. 4 for the tie. 4 will go into share the points. If the match will go into tie, both the teams will going to get 1 point each. But certainly both the teams wanted to get a full points here. If they wanted to get the full points, the chasing team have to get another 5 runs in the remaining 3 deliveries. At the same time, the fielding team, Varada Panduranga, they needed another 3 good deliveries from Guru. So far he's handled the pressure very well. They handled the pressure very well so far. Especially Guru. It's not an easy to come and bowl in the last over. Now new batsman coming into the middle. Pradeep. Whenever the new batsman coming into the middle, I think it's a golden opportunity for the fielding team. It's not so easy condition for any batsman to come and hit the ball. And wait and see how Guru will go in to capitalize this opportunity. And the fielder, still there is a 4 fielder inside the ring. There is no extra fielder inside the ring, because quickly realizing the fielding team is that the more than the ball, the run which is required. So maybe they're going towards a defensive frame of mind. They wanted to restrict the big stroke. They're not really bothered about the singles, because the run required 5, the balls remaining 3. Pradeep facing. Went for the safe shot, appeal for leg before wicket, but umpire is unmoored. It looks like as the ball is going down the leg stump. Leg by call by umpire. One more addition to total with the addition of that single scoreboard moves on to 30 for the loss of 5 wicket. Now 4 required, 3 balls remaining, 2 balls remaining. 4 runs required. 2 runs per ball, which is required run. The run rate required per ball is 2 runs, and this is going to be a decider delivery. So far Guru is looking pretty good in this over, containing the batsman from the big shots. The Vignesh is on strike. Went for the reverse stroke. This time again not really finding the gap, just a single. They're looking for the second. Vignesh desperately wanted a second ready, wanted to keep the strike in the striker's end, but here is the non-striker's end. Run out taken place, but it's a very good thinking there by Vignesh. He wanted to keep the strike for the last delivery. Now last ball remaining, 3 runs required for the victory. The 2 for the tie. The Guru really handling the pressure very well.
When its last over is in progress, 7 required for the victory. Now it's the last ball remaining of that over. 3 runs required for the victory. That means so far, out of 5 balls, he conceded only 4 runs. And he picked up a big wicket as well in that particular over. It's turning out to be fantastic over there from Guru. But job is not yet over. Job is not yet over. Still, he need to bowl one good delivery. At the same time, Varda Panduranga needed one good stroke to get the 3 valuable runs to win the match. Vignesh is the one. So far, he is battling for a long time. He can become the hero here. Because after spending a lot of time in the middle, scoring 7 runs so far from his bat, now that 7 will go into be no value if he is not able to get 3 runs from the final delivery. So Vignesh looks like after getting a little bit, getting the treatment, first aid, and he's just walking towards the middle. And now 3 required for the victory for Padu Tirupati. That was looks like as a hamstring injury for Vignesh. After he run hard between the wicket, it's not so easy day, and so far they're playing the third match, and he's run hard between the wickets. So difficult for any of the players, but it looks like the Vignesh after getting the treatment looks like he's comfortable in the middle, but now he has to get 3 runs. 2 for the tie will go into tie the match, but Guru he doesn't want to give the opportunity for the batsman. Here is Guru. Final delivery. 3 required. Went for the reverse stroke. But fielder is there in the deep. And they're looking for the second. But one is single. Chance of run out. And a presence of mind. From the wicketkeeper behind the stamp. Just a single run victory. The single run victory here for Varda Panduranga. What a fantastic performance here from Varda Panduranga. Defeating a very formidable team. They defeated a very strong opponent. They defeated Padu Tirupati. Just a single run victory. It's definitely going to be a great effort, especially the Guru. Look at the celebration here from Guru. You know exactly. He is the one. He is the hero. Handling the pressure in the last over. When it's 7 required for the victory. Bowled brilliantly. And just a single run. What a fantastic and nail-biting finish for the final match of the day number 1. That's it for the day number 1 of this prestigious JPL 2022. And we want to say the goodbye from a commentary box once again. Thank you very much each and everyone for your the kind support for this success of day number 1. Special thanks to the 3 officials for this cricket tournament. Umpire Arish Padil, Mohan Iyadi and Pushparaj BN done a great job for the success of day number 1. And special thanks to all the technicians of M9 Sports under the leadership of Sarjan. And of course, the special thanks from in our commentary box, especially to our scorer Sachin Kamath, done a great job. And in the scoreboard, Danu Urva done a great job. And of course, my friend Mr. Gopi is done a great job as an indie commentator. And Suresh Bharji and Gopi Bharji also done a great job. And myself, Satish Salyan, saying goodbye from the commentary box. That's it from the day number 1. See you tomorrow morning exactly at 8:30 a.m. The match will going to start exactly at 9 a.m. in the morning. Till then, we are saying goodbye from the commentary box. Good night. Sweet dreams. Thank you.